My date of birth is 27th March 1933. I am the first class matriculate of J&K University बने गॉडनिक in 1949. J&K University गॉडनिक से छो 28 में मैं चुला चार गुज़ार मुतन सोपोरस में ज़्यादा मेरे फादर पाठ होते थे. मैंने ये सैलाब बहुत देखे ये सुन में गॉडनिक लूट के मैंने ज़िंदगी में 27 में वुचमुत. In 47 I was residing Sopore boss for 8th. My father was shot dead in my front due to terrorism. I was only son. Bixiyaz wafat. Majayam Bul. Himse şatı zakmiydi. Terörizm mayısı pat. Burası akela pat. Aklut sürgübüd. Ya generation san karşın lurgumut. इस karşın imam vermitin. History revealed हर 50 साल के बाद एक कश्मीरी पंडित का लूट हुआ है. बम आए 50 बजे बाद खोच आए 50 बजे पठान आए कबीले आए हर आज तक 27 पद 50 बजे पता गई लूट. मगर ये तो गई फर्क आज कट रूट सान युथ जाग रोजान ब्योल रोजान नवान आज थोड़ा सह ब्योल तुम अत मिसाल मज कब वनस मे कैसा सोरे गो खत्म जान बचाए बच्चे लसन बरस रोजगार कमो कोरुक जोन कोरुक ओबिडेंट है तो मेरे भी पेंशन अच्छे से चलते हैं इसका पच में क्या थोड़ा एक दो बोस ऐसे नवकार करने वाले जात रिटायर के सोच में आजादपुर मंडी में बिहत तो आरती सेशन जब माल त्रा तो उस कलकत्ता बापू रखने तो हमें मुन्नम तो आप कहाँ रहते थे मैं तो क्या मैं कल बोलूँगा थोड़ा बहुत लोग चार पढ़ लिया खा के साथ पत रो करते पच में क्या शार तो लिखे तम खैर साहब कर कश्मीर फाइल में मोन रोल तो सह कोशर रोल मा कश्मीर फाइल सारी तुम वुचम अस दिवान आतंकवादी दिवान ये 100 रपी अस क्या 100 रपी दिवान 200 रपी दिवान आई एम दैट पर्सन अनुपम खैर सह बैकरिंग आवाज घर वंद यो घर सा यम सात तम बिस्कुट खान सह मेन मिसेस शी इज हियर. Okay, yes. He was here yesterday. Okay, yes. He told me. पंडित प्रेमनाथ स्वर्गीय वकील सह रोल साहब चार्टर सह मेन बड़ी लड़कन कोर्मुत चीफ मैनेजर ऑफ रेजिडेंस के राना वो बैठे हैं. उन्होंने बताया था ना कल ये लोग 4-5 10-15 बजे सीरियल बनावन वारिया सीरियल बन वैताल 25 से मासे वैताल 25 से तो कश्मीर बूझमुत वो हमारी है लिखा है मैंने वो बताइए पत बारा और में पागा वन दबन का तो सो में बने का तो सो सुच में होनी तमिस मारा वन में जवाब इस कहते सोचो जहां हम रहते थे उसे फिरदौस कहते हैं. जहां हम रहते थे उसे फिरदौस कहते हैं. जमाने ने करवट बदली हमें बर्बाद कर डाला. जमाने ने करवट बदली हमें बर्बाद कर डाला. उस घर से कूच करने से पहले क्यों न सोचा कहाँ जा रहे हो कहाँ तेरी मंजिल होगी. कहाँ जा रहे हो कहाँ तेरी मंजिल होगी. पहुंचे जब शहरे अंगारों में तो हमने क्या पाया. पहुंचे जब शहरे अंगारों में
तो हमने क्या पाया, जलते बदन पर नजर डाली तो घर याद आया, जलते बदन पर नजर डाली तो घर याद आया। पूछूंगा उस कायनात बनाने वाले से कि हमने क्या बिगाड़ा था तेरा, पर तब ना जब वो नींदे गफलत से बेदार हो जाए। है ये कुदरत का कानून कि हर शाम के बाद सुबह होगी, है ये कुदरत का कानून कि हर शाम के बाद सुबह होगी। हम भी हर पल हर लम्हा उसी के इंतजार में बैठे हैं, हम भी हर पल हर लम्हा उसी के इंतजार में बैठे हैं। जहाँ हम रहते थे उसे फिर दोस्त कहते हैं। थैंक यू मैडम। इनका बैग है यहाँ पे। कौन सा बैग है इनका? बैग कौन सा? कैन यू डू इट इन द मिडिल समवेयर? दोनों आपके? साहिल जी तार वाली माइक चाहिए भैया टेबल पे, 3 माइक्स टेबल पे। No, there is Can you just Pradeep ji? I think you should start. I think give me. बोल मुझे नहीं कौन आप लोग आपको करते हैं। तो भी हम इसमें वो कौन शिफ्ट करेगा? अगर आपको 1 घंटा 15 मिनट है किसी को सुनाना नहीं, शेड्यूल में कहाँ है? 8 मिनट अभी वो चला ये वाली।
हेलो नमस्कार महाराज गुलजगेट सारनी ब सतीश भट्ट जम्मू कश्मीर विचार मंच का लॉकआउट कार्यकर्ता शुताई वेलकम करन आज second day of global Kashmiri Pandit Conclave. Yesterday we had our first day of global Kashmiri Pandit Conclave, in which various interactive sessions were conducted, which were moderated by our eminent community members, and the panel included elite personalities, and each of them enlightened us with their thoughts. We were also blessed by Pujni Sadhguruji, who joined us through virtual platform. Bushus Toy Sarni Bay Akfir Swagat Karan is Dumi Duikis Conclaves. I request all Timwatan Pani Pani Jai Thod to Iskaro National Anthem. Man Deen Bhagi Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchchal Jaladi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे वंदे धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्रीमती नीरजा जी से कि वो आगे आ जाएं और आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नीरजा जी। Namaskar again. Bar Chisari Ivan Magar Kazki time to come, so to accommodate Karun. So would like to start with our first session. And I would like to call on stage Deepthi Tikku, who is going to moderate the session, Dr. Ramesh Raina, Ms. Deep Shalini, Mr. Ashwini Bhatt, Ms. Vitastha Kaul, Mr. Vinod Kaul, and Vasu Raina. Kindly come on stage. हेलो Sorry, I'm really sorry. Sorry, Mara. M.K. Bhatt sir. We need one more chair. We need one more chair. Vinod, I'll be here. नहीं, आप बैठे हो.
Namaskar, Sarni Gulzagandit. Hope you all are doing good. Mahara bich bad khushi ki ratuk program te rood bad asal. So we are sure azuk program te roz vare asal. So today we are starting with a panel discussion wherein we have in our panel the worthy guests over here. So let me introduce you to the guests first. We have with us Vitasta Kaul. She is a student of journalism with Times of India. Can we have a hand for her? Vitasta Kaul. Then we have with us Mr. Ashwini Bhatt. He is a TV journalist, a debater, an activist, right? Very humble, very down to earth. So kindly a louder applause for him. Then yes, women power is always there, right? शिव के साथ शक्ति का होना बहुत जरूरी है. So we have amongst us Shakti, Deep Shalini ji. So Deep Shalini ji, she is a teacher by profession. She writes also. She writes songs and she does n number of other things. So a big round of applause for her also. Then we have in the panel Dr. Ramesh Raina ji. I don't suppose that I need to talk much about him. The president of All India Kashmiri Samaj, Dr. Ramesh Raina ji. So he's having a big smile on his face. Look at him. Yeah. I welcome you all, sirs and ma'ams. Then we have with us Mr. M.K. Bhatt. Mr. M.K. Bhatt ji, the Helpline Humanity in Jagti. That's the brainchild of Mr. M.K. Bhatt ji. So welcome to this panel discussion, sir. Next, we have Mr. Vinod Kaulji with a big smile on his face. Mr. Vinod Kaulji, he is an engineer by profession, but a social activist, a community activist, and doing a lot of work for the community services. We welcome you, sir. Then we have one more youth over here. We have Vasu Raina with us. Vasu Raina is a musician by profession. He is a songwriter, right? And definitely, yes, he is a proud KP child. So we welcome you, Vasu, to the show. All right, so let's begin with this panel discussion. Basically, what we are trying to do, we are trying to see it from a youth perspective. The topic is Unstoppable KP Community in Exile from youth perspective. And we'll definitely like to have this as in thoughts and the viewpoints of our seniors over here. So I would like to call upon stage Deep Shalini ma'am and speak a few lines. Deep Shalini ma'am, please. Hello. Namaskar to one and all here. First, let me correct you, Deepti ji. Sorry to say, my introduction was not complete. Yeah, I'm a practicing artist for last 25 years, a visual artist, and I take keen interest in social reforms in whatever way regarding our community and general as well. A big namaskar to one and all present here, my Biradari members, as well non-Biradari, where all my voice can reach. I stand here for the children of Kashmir, the youth of Kashmir, the future of Kashmir. So much has been spoken about our community, its glorious past, its resilience, and present capacities. But where is the spirit of Kashmir now? It's everywhere, out of Kashmir. It's scattered, enriching every part of globe where a KP can reach. But the motherland lies vacant without her children. The mother who nourished us from the land of great saints, yogis, yoginis, philosophers, artists, thinkers, lies barren today. So what are we going to hand over to next KP generation? Who's an easy prey to fake liberals and seculars around? Like Sadhguruji said yesterday, we got to change the narrative. So let's start from right narrative to be given to our children.
Number one, the first being that we did not flee. Rather, we did not have a choice. I repeat, Kashmiris did not flee from Kashmir. Rather, we did not have a choice. That a proud Kashmiri is the highest example of tolerance. Until date, did not pick up a gun. That we are not hate spreaders. I repeat, we are not hate spreaders. Rather, we are a community that paid a price for espousing peace. We had to sacrifice so much, but couldn't sacrifice our values. I hope I'm getting across. None of us sacrificed our values. We should be proud of that. That we are a victim of systematic genocide and still stand for our country. A country which witnessed this gruesome atrocity as mute spectator on the 9th of 19th Jan 1990, up till 33 years ahead, still silent on the issue. This should be embedded deep in our young hearts. And taking this forward, the youth of Kashmir should stand on this proud platform to regain its motherland. For it's a nation's loss that the children of Kashmir are far away. Kashmir, the crown of India. It's like India walking headless past 33 years. Second most important thing I want to ask younger lot here, sitting here, how many friends you have? Real friends who stand by you. Please think over. I strongly believe that KP community needs non-Kashmiri support in plenty. I hope people agree with me for that. We should work on that. For the fact we could not fight back like Punjab, I asked our senior generation, how many friends as a community we have gathered in 33 years? Who are our children going to live with? It's terrifying. How much we have secured them, or in other words, empowered them. Till date, it's our problem, not theirs. Why it is not addressed as a nation's problem? This could happen to any community. So, my dear young children, young future of Kashmir, you have to make more friends. Far and wide globally, wherever you go, do not fear. Carry Kashmir within you, wherever you go. The spirit of Shiv and Sharda will not let you down anywhere. It's in our blood. Do not beat chest and victimhood anymore. Rather, gain momentum in numbers from your neighbors, colleagues, to nation, then worldwide. The stronger you are in number, the more power you emanate. And your power also comes from your self-belief. Let that belief spread over all around you, wherever you go. Focus on activities which bond you better with other communities. Instead of basking in self-praise, give other community reasons to be proud of being associated with you. As Modi ji has opened Kashmir to the nation, are we prepared to embrace all with the same openness? When your pain for your homeland becomes a pain for your nation, then nobody can keep you away from reaching your home. For it's not about a piece of land. It's about the spirit of Kashmir to be regained. Kashmiris can set an example to the world. Next, I would like to address the present government and understand their governance. Respected Modi ji, you have been a beacon of light for India. But regarding Kashmir, it looks like a long road. Timely intervention by our government, by your government, could save much suffering and agony. I want to ask Your Highness, dear Modi ji, how long is the road for our KP children? We want to give them safe Kashmir. Or are we pushing them to pick up guns? As did Arjuna to safeguard his dharma. Or a community with 100 odd organizations should essentially provide leadership to the world?
What are the choices we are giving to our young children? On 19th January, we did not have a choice. But today, what choices your good self has kept for KP children, Modi ji? I ask you, because I want to answer my Biradari children. I believe justice delayed is justice denied. What is the future you see, Modi ji, for our Kashmiri community children? Our 7 lakh can influence 500 crore through our knowledge and intellect. We know it. But is the nation standing with us openly? Or we are still alone? We will not live in victimhood anymore. We shall live a life of dignity. We shall give a life of dignity to our children. I close here on the note, so our young Bhairavas, I like the word used yesterday, young Bhairavas, arise, awake, and stop not till you put the crown of India back to its respectful place. Thank you. Thank you so much, Deep Shalini ji. Very well said. Basically, Kashmir is not only a piece of land, it's an emotion within all of us. So we have to keep that emotion alive. And we, as Deep Shalini ma'am said, that wherever we go, wherever our youth go, they have to carry Kashmir with them. And we have to change the narrative itself. Thank you so much, Deep Shalini ji. Now, we have two youth icons over here with us, Vasu Rena and Vitasta Kaul. So I just want to know, when you relive your past, which you have heard from your grandparents, your parents, right? So what emotions does it evoke in you, and how do you address, how do you want to address this all? Vasu Rena and Vitasta Kaul. Any of you can just pick up the mic and be there and just come up with your thoughts. Yeah. Hello. Jai Ma Sharda. Myun Gulzugandit Namaskar Sarnin. As ma'am, you rightly said, Kashmir is an emotion for all of us, not just people of your age, but for the youth as well. And I think for next generation and for other generations as well, Kashmir will be an integral part of our lives, and it will not fade away as soon as we think. सो जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि आपकी दादी माँ अगर आपसे बात करती थी कि कश्मीर के बारे में, आई विल टेल माय दादी माँ जस्ट पास्ड अवे, शी हैड कैंसर. सो मुझे अभी भी याद है, कश्मीर से इतना जुड़ाव नहीं होता मुझे अगर मेरी दादी और मेरे फादर साहब को मैं अपनी आंखों के सामने रोते हुए नहीं देखती. बहुत दुख होता है. उस त्रासदी के टाइम पे मैं पैदा नहीं हुई थी. माय बर्थ इज 1999 एंड आई एम ग्लैड मैं उस टाइम पे जन्मी नहीं. मैंने वो सारी एट्रोसिटीज, वो सारी मुश्किलें देखी नहीं जो मेरे फादर साहब ने देखी है. एंड और मेरे फादर साहब का एक मुझे बहुत ही एक इमोशनल स्टेटमेंट याद आ रहा है. ही ऑलवेज सेज दैट मैंने अपनी जवानी खो दी इस पूरे माइग्रेशन के टाइम में. He wanted to represent cricket in Ranji. He wanted to represent J&K. He loves cricket, but उन्हें अपने सपने छोड़ने पड़े. उन्हें अपने aspirations छोड़ने पड़े. He was not interested into education, into teaching, but eventually he landed up in teaching only, which was not his actual forte. But उन्हें वो चीज़ करनी पड़ी बिकॉज बहुत ही अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स हुए. एक्सोडस एक ऐसा काला दिन था उस टाइम पे कि मैं उस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पाऊंगी जो चीज़ें आपने महसूस की है. आई कैन नॉट इवन रियलाइज कि अभी भी लोगों में कितना दुख और कितनी पीड़ा है उस चीज़ को लेके. But as a youth, it is my responsibility, and I feel everyone should be responsible to take this legacy forward. When it comes to Kashmiri Pandit community, we as a youth, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी बात आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा. नॉट ओनली कश्मीरी पीपल बट द पीपल, एज मैम सेड, हमें ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो केरल से भी है और जो ऐसे नॉर्थ ईस्ट से भी है. मेघालय से भी लोग मेरे दोस्त हैं, मैं उनको अपनी बातें बताती हूँ, लेकिन उनका एक ही
ऐसा रहता है कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट हैज हैपेंड in 1990s, as media has portrayed a very one-sided story. But we as KP kids, KP के जितने भी यूथ है, उनको आगे आना पड़ेगा और अपने घर की कहानी हर एक के, मुझे अभी लगता है हर एक के पास अपनी एक इंडिविजुअल कहानी है। हमें आगे जाके आगे बढ़ के हर एक को ये चीज बतानी पड़ेगी कि जो हमारे साथ हुआ, इट वाज ए कंप्लीट गवर्नमेंट फेलियर दैट टाइम। नोबडी सपोर्टेड अस। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने जाना है, हमेशा गवर्नमेंट साल भर साल गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन nobody has supported us in any way, nobody has done anything for us. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बाला साहेब ठाकरे जी का, जिन्होंने हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड की। आई कैन नॉट इवन, ये सिर्फ बोलने में आता है कि बहुत आपको रिजर्वेशन मिला है, आपको रिजर्वेशन मिला है, बट उस टाइम पे वो रिजर्वेशन कितना जरूरी था कश्मीरी बच्चों के लिए। आज हमारी कम्युनिटी, वी आर हैविंग 100% लिटरेसी रेट in our community, which is a thing to be proud of. और हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन हर एक इंसान इसमें पढ़ा लिखा है। एंड आई फील आने वाले सालों में भी रिजर्वेशन का इसमें बहुत कम योगदान है। यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत की है, आगे भी करते रहेंगे। और बाला साहेब ठाकरे का जितना भी हम उनको शुक्रिया बोले या उनको उनके उनके कितने भी हम रिगार्ड्स दे, कम ही होगा। सही मायनों में बाला साहेब ठाकरे को ही हमें मानना चाहिए। ही इज माई आइडल एंड आप सबका भी होना चाहिए। एंड प्लस कलहन, ललित आदित्य, ये तो हमारे these people were heroes in our lives and are heroes in our lives. But we should praise those who are giving uh, materialistic and intangible things to our community. I feel हम सबको शुक्रिया करना चाहिए। एंड आई फील दादी या पापा से वो चीज़ खत्म नहीं होती। Even I'm getting emotional, I'm very nervous here right now speaking in front of you, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरी उतनी ना मेरी एज है उतनी, ना मैंने उतना कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया है, बट आई रियली वांट टू थैंक उत्पल कौल जी। He gave me this opportunity to be here, to speak in front of those people who are part of my family. कल मुझे लंच कर रहे थे तो एक मैम मिली, तो मैंने बोला शायद आप मुझे पहचानती नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं, मैं आपको जानती नहीं। मैंने बोला हमारी कम्युनिटी इतनी छोटी है, कल को आप शायद मेरी दादी की मासी की कुछ लगती होंगी। तो it's profound honor and I'm really glad that I came here. I dragged my sister also, that नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप का काम नहीं है जाके बैठकर ये सब चीजें सुनना। You should come here. वो यहाँ पर ही उसने जन्म लिया है, पली बड़ी भी यहाँ पर ही है। वो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और आगे आने वाले सालों में भी मुझसे जितना हो सकता है मैं वो कनेक्ट को रीबिल्ड करने की कोशिश करूंगी। एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर। थैंक यू सो मच। Very well said, Vitasta. Gwyneth Mara chas badapam be ek fir terpop Ethan Youth and Khatra. Now see, all of us have been fighting in one way or the other for the justice that is still not served to us, the Kashmiri Pandits. But as she said, मम्मी पापा दादा दादी तक ही ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, ये चीज आगे भी चलती जानी चाहिए। जैसे हम अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं, ये चीज हमें भूलनी नहीं, और जब तक हमें जस्टिस नहीं मिले हमें इस चीज को भूलना नहीं है। तो हमारा जो आगे का जनरेशन है, द जनरेशन एक्स, so that has to do a lot of work. So I salute people like Vitasta Kaul. Thank you so much, Vitasta. God bless you. Now we have Vasu with us. So Vasu, let me put it this way. If I talk about see the valley of India in the valley, the idea of India in the valley in Kashmir, that was because of the Kashmiri Pandits. That's what I suppose, right? So Vasu, what do you say that considering that our perpetrators, they are still roaming free, we have not been served justice, they are not behind the bars. So considering all this,
Do you want that this idea we represent, as in the youth represents, do you want that we should be relocated to that place and we should take this idea back to the valley? What is your take on it, Vasu? I Yeah. want to ask, can you guys take if we can relocate at that place right now? Are you all able to take that very well, patiently and lovingly? I really don't think so. First of all, because there's been too much history. Very firstly, let's put this out there. There's too much history. I'll give you an example. मेरी दादी हैं, मैं उनको तोशी बोलता हूँ, उनका नाम संतोष है. मैं उनको प्यार से बचपन से तोशी बोलता हूँ. कुछ लोग बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट है, मुझे पता नहीं, बचपन से ही बोला गया है तो मैं यही बोलता हूँ. So I remember मैं स्कूल जाता था. I'll be very honest, as Vitasta gave one side that she's been known about it, I was not known about it at all. मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे बताते थे, मैं समझता था ये क्या है, अच्छा कुछ हुआ होगा. I'm being very honest. There are two sides of Kashmiri Pandit kids. One, Vasu Rana. Second, Vitasta. I'm being very honest. All right. Secondly, मेरे पापा संजीव गौतम रहना है. Everybody, yes. So, so नहीं, I'm getting to that point. आपका ना. So I'm so sorry. So I've been inclined towards art since my birth. मेरे को बताया जाता है मैं मंदिरों में घंटियां लेके भजन करता था, बस छोटा तब था मैं. तब से I've been inclined towards music, towards art, be it any type of art. So I would like to say, kind of an artist mindset. So मुझे जब बताया जाता था ये एक्सोडस क्या था, मुझे खबर नहीं थी. मतलब I knew what it was, but I never knew the intensity. मुझे वो गहराई नहीं पता थी कभी भी. Coming back to when the film Kashmir Files came out, I saw it. मैंने मतलब मेरी फैमिली में देखा था, पापा गए थे, मम्मा गए थे, उनके फ्रेंड्स गए थे साथ में. मैं उनके साथ नहीं गया. I thought I'll just see it alone. मैं अकेला देखना चाहता हूँ क्या है. मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हुए थे. मेरे को कुछ नहीं पता. फर्स्ट ऑफ ऑल I saw it. I was crying throughout. मैंने घर पे आके किसी से कुछ बात नहीं करी. This is me being very honest. मैंने घर पे आके किसी से कुछ बात नहीं करी. मैं तोशी के पास गया. मैंने कहा आपको देखनी चाहिए एक बार. कहते अच्छा क्या क्या था उसमें. वो अकेले बैठे हुए थे. हम शायद पापा को भी नहीं पता ये बात. तो हम अकेले बैठे हुए थे. मैंने उनसे पूछा ये था, ये हुआ था. कहते हाँ. उन्होंने असली नाम लिए. मुझे एक्चुअली नाम ये नहीं. आई थिंक गंजू थे. एक नाम गंजू था. एंड गिरजा गंजू, यस. And lot of names she said, and she was like, and she hasn't even seen the movie first of all. तो मेरी जो रूह है अंदर से वो थर थर ऐसे कांप गई. मैं रो नहीं सकता हूँ तोशी के सामने, ऑब्वियसली उनका बहादुर बच्चा हूँ मैं, तो उनके सामने थोड़ी रहूंगा. सो इट वाज अ शॉक, एंड देन आई अंडरस्टूड व्हाट इट रियली वाज. तो उसके बाद से मैंने और रिसर्च करी. इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है हमारे पास, एंड मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत पढ़ा इसके बारे में. एंड देन आई सॉ ऑल दीज इंटरव्यूज ऑफ पॉलिटिशियंस सेइंग that it is a propaganda. I don't understand what kind of propaganda it is. हमने 33 साल हो गए हैं शायद, अब 33 years, am I correct? 33 years, yes. So 33 years हो गए हैं, हमने कभी रोना नहीं करा, कुछ बंदूक नहीं उठाई, as ma'am also said. Why didn't we do it? If it was a propaganda, हम कितना मुश्किल है. बंदूक खरीदो. हम इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, as everybody said. We have 100% literacy rate. हमें आसानी से जॉब्स मिलती है, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हम इंडिया की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं. कितना मुश्किल है बंदूक खरीद के मार देना. It's very easy. But we are not like that. We will never be like that. Why? Because we are Kashmiri Pandits. हम शिव भक्त हैं. This is not what is written in our culture, in our history. ना ये कभी होगा आगे. There can be other वो जो हुड़दंग वाली गैंग्स होती है जैसे उनकी है, हमारी बन सकती है. एंड आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ नहीं करा. सॉरी. काफी बार मतलब ऐसा बहुत सारे राइट गैंग्स बन सकती हैं, बट अगेन we'll come to the same point where we were. We'll just sit here, we'll discuss about it, we'll share all our emotions. That's all we can do until there is a perfect solution. And I think awareness about it is the start to it. And awareness, I think, like जैसे मैं aware हुआ हूँ
from that artistic film called Kashmir Files, which is not at all a propaganda. My dadi confirms it, and मेरे लिए मेरी दादी की सोच सबसे बढ़ के है. And I think आप लोगों के लिए भी same opinion होगा. And there's a शेर by the legend John Elia. वो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था. I'm sorry, I was not supposed to take names. अब मैंने ले लिया है तो चलिए कोई बात नहीं. मतलब चलिए ठीक है, बोल सकते हैं ना फिर. अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ये प्रोपोगंडा है. अगर ये हुआ था तो कश्मीरी पंडित रोए क्यों नहीं, कभी उन्होंने हल्ला क्यों नहीं मचाया. अब वो हमारी चॉइस है, हम मचाए ना मचाए. जॉन एलिया साहब ने कहा था कि मतलब जिन लोगों के पास हंसने का हुनर था, इतना हर बात पे जो हंसते थे, उनके पास वो हुनर था. अगर वो एक किसी बात पे रो रहे हैं तो कोई तो बात होगी, है कि नहीं? कोई तो बात होगी. मुझे आई एम अ 22-year-old राइट नाउ. आई टर्न 23 दिस ईयर इन अगस्त. मुझे कुछ होशो खबर नहीं थी क्या था. मैंने बस एक फिल्म देखी, घर में आके अपनी दादी से बात करी जिन्होंने वो फिल्म देखी भी नहीं है. शी ट्राइड टू वॉच इट 10 minutes, शी वेंट अवे. चलो खाना खा लेते हैं, नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाट शी वाज, दैट्स व्हाट द इंटेंसिटी वाज. एंड आई नो किचन में जाके वो रो रही थी, फिर वो चाय बनाने आ गई तो एवरीथिंग दैट फ्लशेस डाउन. गोइंग टू द, आई एम श्योर बहुत लोग किचन जाके फ्लश डाउन कर देते हैं अपने इमोशंस. We have to stop that. We have to accept our emotions first of all. हमें ये करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे. हमें खुल के बात करनी पड़ेगी, तभी हम आगे जाके बढ़ पाएंगे. We are Kashmiri Pandits and we'll always be Kashmiri Pandits and Kashmir will always be ours. That's all. Thank you, Vasu. I just liked that candid attitude of yours, right? And you're being very honest in what you said. So definitely, yes, honesty has to be there. But yes, I would also like to thank the Kashmir Files team, because prior to that, probably there were many people across India, across world, who were not knowing that what actually happened. And that's what he said. At times, we don't have to crush our emotions. At times, we have to come up with what we have inside us, because we want people to know. And the Kashmir Files was the best medium to do that. And after that, even I have been getting mails and calls that we have failed you as a community. So sorry, my friends who are from different places, right? So that awareness is important, and it's our responsibility, but being parents, that we have to create that awareness amongst our children also. Thank you, Vasu. And Vitasta would also like to add a point. Vitasta, I want you to be a little brief, because we have other panelists also. Thank you. So I'm glad now he's aware about his roots, and I wish कि वो आगे भी अपने दोस्तों को भी बता सके. And I'm glad that you're here. I have a major problem with the term called migration. Firstly, we are not migrants, and we should stop saying that we are migrants. We are internally displaced community, and we should call ourselves as immigrants, because technically if migrants वो लोग होते हैं जो दूसरी कंट्री से रिफ्यूजीज बन के आप दूसरी कंट्री में शरण लेते हैं. हम अपनी खुद की कंट्री में शरण ले रहे हैं. So we are not migrants at all. And stop saying that we are Kashmiri migrants. We are not Kashmiri migrants. We are internally displaced community, and we should actually correct our English, and we should actually use right verbs. And I wish लोग इस चीज को समझे, और हमारी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो हमें जहाँ पर हम रिहैबिलिटेशन जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट को, वो भी इस चीज को समझे कि हम किसी दया और किसी सिंपैथी के मोहताज नहीं है. वी आर अ कम्युनिटी. इफ अगर हमें 90 के दशक में खुद अपने पैरों पे खड़ा होना आया, और आज यूएस, कनाडा, मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज में अगर हमारी इंडस्ट्रीज है, तो अगर हम उस वक्त पे उठकर अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, तो यू आर नॉट समवन टू टेल अस दैट वी आर माइग्रेंट्स. वी कैन अफोर्ड आवर फूड, we can afford our clothes, we can afford everything. And जगती migrant जो आप कैंप को बोलते हैं, वहाँ की जो दूरदर्शा है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ मीडिया चैनल्स मैंने देखे हैं, पर्टिकुलरली दूरदर्शन. वहाँ पे अश्विनी जी करते हैं रिपोर्ट, तो उनसे मेरी बात हो रही थी. कह रहे थे कि वो दो पहलू है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के.
एक बहुत ही इलीट क्लास है और एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ अभी भी राशन कार्ड पे लोग राशन लेकर अपना खाना खाते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर वो गवर्नमेंट से अगर खाना ले भी रहे हैं, तो भी कोई हक नहीं होता लोगों को ये बोलने का कि कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, भाग कर आए थे। Jammu is also our land. Dogra people are also our people. We are Indians. As our preamble says, we the people of India. So जब वो बोला जाता है, we solemnly resolve to constitute India into a secular democratic country, we should actually mean that. And government से मेरे को यही एक दिक्कत है कि माइग्रेशन को हमारे साथ ना जोड़ते हुए इंटरनली डिस्प्लेस का टैग लगाइए और हमें अपने हक को लेकर ही रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है हमारे जैसे यूथ है, ये वॉलंटियर्स को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट टाइम मैं एज ए स्पीकर ना आते हुए वॉलंटियर बनना चाहूंगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इन सबको मिलनी चाहिए। जहां पर आज मैं हूँ, कल को ये भी आके अपनी बात रख सके। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन in this hall. Thank you so much, Vitasta. Very well said. Now, at times people ask us, what is this KP Conclave? What are you doing there? क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसे हो रहा है? This is what is happening here. This is what is happening here. I want to tell all those people. Okay, next we have other panelists also. So I would like to ask Vinod Kaulji. Vinod Kaulji, if I would, I don't know whether I would be right or not, but if I talk about that Ottoman Empire, wherein 1.5 million Christians were killed and they were not even being apologetic about it, right? So that is what happened with our perpetrators also. They are not being apologetic about it, not to acknowledge about it. So what is your take on it? As in, can we draw that analogy? Yeah, please do. Namaskar. Namaskar, Sani. Thank you for giving me a chance to talk a little bit. Interesting panel. We have millennials, we have Gen X, we have Gen Z with us. And I am very happy to hear the Gen Z part of it, which is what it is about. Raat O session was about wars and where and what we did. I think today we have many sessions where we're talking about the future and what exactly our way forward is. And I'm sure we have few more sessions where we talk about it. I loved a couplet which was recently on a Facebook post, which was, and I follow Avtar Motaji a lot. I love his writings on Facebook. It was about Boz means Zar, Zare Par, Avare Karthas. Listen to my woes, listen to my agony. An aimless wanderer, I have been rendered in this love. And this is the love of Merge Kashmir, which I see here in the Gen Z also. And I'm really happy to see that. And, we talk about unstoppable Kashmiri youth, and which is the millennials and the Gen Z part of it. And in Exodus, we experienced, materialistic loss, Esro Setha, Mrs. Akchi's dignity, pride, which I think as when I was Gen Z in 90s, and that's something which hit us very hard. And I think that is where we were rooted in culture. When this is something which I'm talking to Gen Z, we were rooted in culture. We were rooted in our culture, and we were weaponized with one thing, just as education. And I think that made us move mountains, and today we are largely successful. I mean, their success doesn't have a final thing. There are a lot of things still we have to do, but we have become largely successful. At education aspect, I just wanted to correct Vitasta. She talked about Bal Thakre ji, but there are within our community people who made it happen, and one of them pioneers and legends is Kav Sahab. And I would like to say cheers about him. While the political system helped us, which has many names which she mentioned, but Kav Sahab was one who was the one who initiated this thought, and it was helped by the politicians to move. Okay.
And coming to basically, the point that where we are moving ahead. I think the 2 points which I want to communicate. One, well, we are largely okay. I mean, we are doing well, but there are many of us who are still struggling, and particularly from the professional world, we as community need to be more compassionate on that front and help those who are not so well among us in the professional world. That's one. Second is Vyakatas ki culture, the language. Is a raht ashar apne ki agar na language roses, the culture roses, our fight is lost. And I think that's one thing which we have a way forward, which we're talking. And while it is, you should take dabun dahmas ki a point ki ऐसा करो पानिंग language रसराओ इस पकनाओ ब्रोट मगर तम खतर पेस तम को थोड़ा ज़्यादा करो. I mean, it has to have something different. It is not about just saying. We need to fund it. We need to have organizations which are doing it dedicatedly. I mean, it is not something we have a Chikaran. Gosh Taruk is one of the programs which JKMBM runs and from last 26 years. And it has proven its success. I mean, it's something which has proven. In last 30 years, we have a group of children who can speak, sing, and who are associated with it. And it has done something good for the community. It is one. There can be many like that. I mean, and that needs funding, that needs dedicated teams of people. And that is something which this 2 days enclave should have one takeaway. There are many others which we are talking of, return and rehabilitation, but return and going back to our roots. मगर ये अक्ष जरूरी कि इस कित कहीं रसराव परुन culture तो ज़बान नई भी generation मंस यम season तिमन मंस अंदर रोज़ी कि अशु there is a connect to Kashmir and language is the only thing. अगर इस अमेरिका रोजान चित हिंदी च बोलान, that's why we call Indians. I mean, if you, well, you are speaking, you have a connect to India. I mean, so you have to keep that. So that's something which is very important. And I hope that's what is the session about. Thank you very much. Good luck. ये माना ची शामिल कर देते बचे हैं? Okay, thank you very much. Thank you, Vinodji. Vinodji and mein bar asal akkat. Says panun culture to language to such as rasravin. क्या इसकी language है identity. ऐसा ना हो कि 20 years down the line आसन सुइन सिर्फ surnames. कि calls were there, tickus were there, dars were there. ऐसा नहीं होना चाहिए. इस चीज को बचाने के लिए लैंग्वेज जो हमारी आइडेंटिटी रहेगी उसको हमें बचा के रखना चाहिए. और मैं एम के पंडिता जी से आग्रह करूंगी सर आप वहीं पे माइक लेके 2 शब्द बोलिए दैट हाउ कैन बी एज एन Just one fact I want to correct, because in such forums these things get ingrained in our mind. Pachis soi daban yoich pose. Vitasta rightly said admission which helped us, our community. I must appreciate your thought, but I need to correct certain things which we need to understand. This admission process, yes, we got in Maharashtra. There were some people who were associated with that, including Amarnath Vaishnavi ji. Hiraraj Bhaji will, bear me out. He was also with him when they went to Mumbai. It was Kedarnath Sahni from Delhi who initiated this and who talked to people in Bombay, in Maharashtra, including Sharad Pawar. It was initiated during when Sharad Pawar was the chief minister. It was initiated at the time, but finally it was implemented during the rule of BJP Shiv Sena led government, and the day it was put in the assembly and what was passed in the assembly, that day Gopinath Munde was the chief minister. So we should give credit to all. Yes, Shiv Sena also played a role in it, but it was not entirely. So it was restricted only to Maharashtra. That is number one. But the extension of the same scheme to all Kashmiri Pandits in different colleges
in the country, it was the role of Mr. M.K. Kav. We must appreciate that. Kav Saab has played an important role today. If we are getting admission in prestigious colleges of Delhi University, it is only because of Mr. M.K. Kav. In fact, Maharashtra seats have gone down now. In other colleges, countrywide, it is still M.K. Kav Saab's signature which is helping us today. Thank you. सर वो मैं कर दूंगा प्लीज. सारनी मेन तरफ नमस्कार. Myself M.K. Bhatt. मे बासन यह मेन खतर खुशी हज कत तुम ये सारी खास कर यह ग्लोबलाइज वनिक तान ये सात कत करान यहाँ से जम्मू बेस्ड या दिल्ली बेस्ड ये वनकस सारी आफ्टर 90 मेन खतर वरदान क्या बहुत आंदोलनस मज आमुत आंदोलनस ये सात स्कूल गन 90s मज तम सात पे एजिटेशन तुल ये सात मोन कॉलेज गन मे पे एजिटेशन तुल ये सात जॉब मे वो कर मे पे एजिटेशन तुल ये सात मे वो रोजुन मे एजिटेशन तुल ये सात मे वो गन मे एजिटेशन तुल गो बहुत जामत एजिटेशनस मज वो इसलिए 92 मज ये मोतीलाल भट्ट साहब तमो कोर्स बह RSS में ज्वाइन बालक तन सह दह तो आज दह मे ना दह कुन ना रात कुन क्या तमिस मज प्रॉब्लम्स तक अक प्रॉब्लम्स कह यमो वो वितस्ताय तक प्रॉब्लम्स तक गोथै अगर कह वो जॉब्स करने गसन तक बना ओल्ड एज होम तक कैंप्स यमन जॉब अपॉर्चुनिटी गोची कत यह सेंटर स्पॉन्सर स्कीम कह वनिक तान गसन कश्मीरी पंडितस इम्प्लीमेंट कह कहीं ति प्राइमरी स्कूल कुन ति कैंपस मज SSA थ्रू आ यह वास्तविक यह सारे जानकारी या रमसाई थ्रू आन कुन जाए क्योंकि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम चाहे ओल्ड एज चाहे आशा वर्कर चाहे बाकी चीज कहीं ति इम्प्लीमेंट क्या कहीं पंचायत राजी DC नंबर 1 क्या कर रिजर्वेशन खतर फाइट कर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंटस मज स्टेट जरूरत क्या सेंट्रल गवर्नमेंटस मज ये तम सात 2003 ये PM पैकेज ऐसे कह डॉक्टर सुषमा चौधरी विचार मंचन को तम सात पहल बनो नगरोटास मन बटरबाली गई कुन मेमोरेंडम रातस तम सात मेहनत कर्म दिमो यह सुषमा चौधरी यह मेमोरेंडम पत दुत तमिस मेमोरेंडम तथ गई सेंट्रल गवर्नमेंटस मज सह पास कि तमो वो नसा इन प्रॉब्लम बनो तथ मज टीम डिफरेंट टीम्स आई बनाना कि गवर्नमेंट जॉब्स मगर अनाउंसमेंट कर लॉबी चले क्या गो वो वनकस पता सक्सेस न सक्सेस वो आपको पता है. मैं उस पर कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता. नंबर 2 इथे कन वनिक तान कहीं तह स्किल इंस्टीट्यूट कहीं पन हेक वनिक तान कर पन स्कूल खोलित कह बड़ बड़ दावा कर करो वो कर अगर वनकस प्रॉब्लम कह बच्चे पान क्या तमिस खतर सोचमुत कहें एजुकेशन दिस हेल्पलाइन ह्यूमैनिटीन रूल रोनमुत दिस एजुकेशन सह कन्वर्ट कर जॉबस मज चाहे वो तथा बार बार कंपनीज प्लेसमेंट सेल्स त्रावन सह बच्चे हम जब तक रहे हैं तब तक हम बच्चे नहीं छोड़ेंगे. चाहे तमिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खतर कर तमिस ट्राई कि कम्पिटिटिव एग्जाम गसन क्वालिफाई कर एजुकेशन तान एजुकेशन कन्वर्ट जॉबस मज तोतान सक्सेस एजुकेशन कह चाहे सह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पन एंटरप्रेन्योरशिप कर चाहे सह प्राइवेट प्लेसमेंट कर कुन जाए
अच्छा तिथे आप लोगों की सहायता है अच्छा तुम लोग यम तह कंपनी में एच आर तिम क्या ब्रोट कुन तिम क्या कंपनी में तिम क्या जब हम ऑफर करते हमने 35 कंपनी इस साल भी लाया 25th को जत्ती में लाया हमने प्लेसमेंट गई क्या गई 25 बच्चे गए तिमो सिलेक्ट ICICI बैंक ऑफ बहुत सारे कैंपस हमने इससे पहले भी 2019 में किया अभी तक हमारे कम से कम योगदान है 296 हमने PM पैकेज की कोचिंग दी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी ऑनलाइन कोचिंग दी 650 बच्चे हमने सिलेक्ट कर दिए अगर हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं आप भी कर सकते हो मगर इसके लिए कम्युनिटी का क्योंकि पन कहें स्कॉलरशिप दिवान बाकी चीज दिवान कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा कर वन तान बटन मज कह ती स्कॉलरशिप इम्प्लीमेंट गसन SC ST OBC प्रत कह मिलान स्कॉलरशिप मगर बटस कह मिल क्योंकि हम क्राइटेरिया में ही नहीं आते कहें यम सात CSR थ्रू गसन कहें कुन सात गसन तक यू आर नॉट SC ST इथे कहीं महाराज बहुत सारे वेनती कर प्लीज एंड प्लीज क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज खतर युतान तुम पान पान पन पान मनन करियो कि क्या ब्रो कुन गसन कथ कर प्रत कह चीज कर यह बड़ चीज ये मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी को जिसने पूरा अवेयरनेस किया कि कश्मीरी पंडित की फाइल मे पता क्या क्या यम सात सारी अगर तुम पान पता यम सात मेरा अंकल मेरे सामने मारा गया क्या अच्छा पता क्या गो मगर वर्ल्ड को नहीं पता ये डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी ने पूरे विश्व में पूरे क्योंकि ग्लोबल डायस्पोरा का इसका बहुत बड़ा रोल रहा हर एक जगह इन्होंने हमारे एक लाइब्रेरी तक वो विवेक अग्निहोत्री जी को लाया क्योंकि उन्होंने देखा उन्होंने सोचा हर समय इथे कन वनकस बड़ कॉन्फ्रेंस कर एक इकवटे गसन बड़ चीज यथ मज पगह सोशल मीडिया मं हे हूँ बुलोव न यह बुलोव न सिर्फ पानवी खतर बसान कस पानी पन्ने कम्युनिटी खतर बसान ये बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे में बह वो तुम चीज ऑर्गेनाइजेशन तक जमीन में चलान तुम वो कचा त्रासदी मे खतर बसान मे बसान पन्ने बट बॉय खतर क्योंकि मुझे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती मगर पन बट बॉय में क्रिटिसिज्म कर ये फैक्ट है इस फैक्ट का हमें स्वीकार करना चाहिए हमें तब तक है ये नहीं कि क्या इसका वो नशा गलत हो जाए क्योंकि हमें जब तक हम अपने आप को मनन नहीं करेंगे तब तक हमें ये चीज नहीं है फैक्ट इज फैक्ट अत मज कह चीज बाकी बह वन यह मारा करो आज प्रेन कि बनो पन बड़ बार यूनिवर्सिटी ये यीटा बट हेकान गो बनो स्किल इंस्टीट्यूशन बनो पन कॉलेज बनो पत कह चीज कर पन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वनकन कहें वन तक क्वालिफाई नीट गह क्वालिफाई IAS क्वालिफाई सिविल सर्विस खतर क्वालिफाई हमने क्या उसके लिए सोचा ब्रो तेल कत कर एडमिनिस्ट्रेशन मज पकड़ आज कहें पकड़ वजह क्या हमें दो IAS निकले एक अक्षय लाबरू जी और रोहित भट्ट निकला और कौन निकला और कोई नहीं निकला बाकी क्या उसका एक नैरेटिव भी है पट बट ऑफिसर बना पत मदद कर यह बोड़ बार फैक्ट यह बोड़ बार फैक्ट यह फैक्ट मैं आपको क्योंकि हमने हर एक चीज देखा क्योंकि मैं उन बसो आंदोलन में हमने प्रैक्टिकली हम जी रहे हैं हम थ्योरेटिकल में नहीं जी रहे हैं बाकी मे तरफ अगर मे वर्डो मे शब्दों चाहे यथ महफिल या बाकी सोशल मीडिया में तकलीफ लोगमुत कह दुख लोगमुत मे गो माफी दिन नमस्कार जय हिंद चीज मारा वह धन्यवाद कर MK काव साहबस बे अमरनाथ वैष्णवी जी ये रिजर्वेशन सीट थो हर एक यूनिवर्सिटी में क्योंकि MK काव साहब यम सतन सो आव नगरोटा कैंपस में हमसे बात की थी तो तमिस नसा प्रत कुन जाए रिजर्वेशन उन्होंने सही कहा कि हमें केदारनाथ साहनी जी ने और क्योंकि केदारनाथ साहनी जब मिलित तम पे अमरनाथ वैष्णवी पे गई टीम मुंबई तत कर तिमो कर पे रिजर्वेशन खतर सही चीज पे हर समय तिहद शुक्र गुजार रोजन इथे कन प्रोफेसर इम्ताब मुटू ने
यम सतन दोन घंटन क्लास आसान 2 to 4 बजे इवनिंग शिफ्ट तम कोर रेगुलरस मज यह प्रोफेसर अमिताभ मुटुन देन नमस्कार Thank you so much, MK Bhatt Saab. Ak sad news, Maharaj Surinder ji, please. We have a very sad news coming right now. Another Kashmiri Pandit killed in Pulwama. I think we need to think about it today. We may have to contemplate doing something tomorrow, maybe protest, or maybe 5-member team going to the Supreme Court. Not protest, but we need to create awareness. It's a very, very sad story coming. You can continue. Yeah, we will think about it. So let's carry on with this. We'll just try to wind it up. We have Ashwini ji here. Ashwini ji, just a question which is as in coming to my mind, that this probably, if I talk about this militancy, it has been slashed to a great extent by the paramilitary forces. But what about the hostile attitude of the majority community there? That jihadi mentality, how can that be killed? Ashwini ji, please. Namaskar. Namaskar, Sarni. I'll start with a quote by a Nobel laureate, Czeslaw Miłosz, which goes like, in a room where people unanimously choose to have, unanimously maintain a conspiracy of silence, one word of truth sounds like a pistol shot. This conclave, while a lot of people said that, we should be picking guns, why have we not picked guns, or we can't pick guns, but this conclave is metaphorically that sound of pistol shot. Kashmir Files was a metaphorical pistol shot as an effort from a peace-loving community to show the resilience and to show the grace of our fight. Now, coming back to your point in terms of what needs to happen, I think we can spend a lot of time talking about that, and but due to the paucity of time, I will put it, simply that it's a 3-4 way step process. One is the de-radicalization, right? Unless and until there is de-radicalization that happens in Kashmir, and have a sense of security and a sense of law and order, it is till that point in time, as just, I'm a little emotional right now because of the news that we just got. It's in that same vein, right? So we can't lose our brethren like this. We can't lose our brothers and sisters like this. It has to be a laid down plan of de-radicalization, sense of security, writ of the state, might of the state, and then a return and rehabilitation, not without making sure that there is a genocide panel, truth and reconciliation. Forget about rehabilitation. We haven't even gotten acknowledgement of our genocide. So that's something that those 3 or 4 or 5 steps need to happen before we even talk about sort of the rehabilitation in literal senses. So thank you. Thank you, Ashwini ji. To the point and well said. Now we have Dr. Ramesh Raina here. So Dr. Ramesh Raina, I would like you to throw some light on the rehabilitation and the route to rehabilitation. That what should be the way forward? So, Sarnish Namaskar. Thank you so much. But I don't know, I'm lost today. I'm lost for my words once I heard this news. It is very difficult for me to talk about what needs to be done and how to go forward. Anyway, the life has to move. I'm really humbled and, of course, privileged also to listen to our youngsters, to the generation that's born and brought up
outside Kashmir without any emotional connectivity with Kashmir. To know their sentiments, the soul is intact. Coming to the basic arguments, the basic argument is that whatever we anticipate to do or whatever we intend to do, for everything, it has to have Kashmir Connect. Unless and until we don't have Kashmir Connect, our all rhetoric fails. Therefore, Kashmir has to be retained as a core constituency of Kashmiri Pandits. What does that core constituency mean? If you remember, before 1947, when Hindus from Pakistan used to come to Delhi, they used to define themselves as Pindi da Hindu hu, Rawalkot ka Hindu hu, Lahore Hindu hu. There was partition, they lost their core constituency of Pakistan and they got assembled in the broad mainstream of Hinduism. Now there is no Pindi ka Hindu, there is no Rawalkot ka Hindu, they are Hindus of India. Therefore, if at any given point of time we lose our core constituency, we are assembled in the broad mainstream and there will be no Kashmiri Pandit. We will only be Pandits without being Kashmiri. So for us, it's a great compulsion to retain Kashmir as our core constituency. And this is why I'm telling this thing, because we are in a transition phase. When our generation is fading and the generation that is sitting here, they are taking over, they must understand. They must understand. Okay. They must understand that we are aborigines. We have a 5,000-year-old history, both written and spoken history, that cannot be wished away. Therefore, there is a Hindu dimension of Kashmir, and that Hindu dimension of Kashmir retains Shankaracharya as Shankaracharya. It can never be Takht-e-Sulaiman. That is, this Hindu dimension retains Hari Parbat as Hari Parbat. It can never be Kohimaran. That is how Arnimal continues to be there. It can never be a poetic imagination, as somebody contested that she is a poetic imagination, though she has richly contributed to the folk of Kashmir. Even today also Arnimal is being sung, not by us, but even Muslims as well. Now, having said all these things, what is important for this generation to move forward? The most important part of the story is that it should live in their race memory. Unless and until what has happened to us doesn't live in the race memory of our generations, the whole thing will be coming to end, maybe 10 years down the line. But if Israel can create a wailing wall for its generation to wail, the message to the generation given by that wailing wall is that this is a hard-fought victory for Israel. There's a wailing wall, and each year they go and wail before that wall. That is symbolic of the sacrifices made by the people who created Israel. We too have a wailing wall in the form of 14th September. We too have a wailing wall in the form of 19th January. So all these things have to enter deep down the race memory of the generation that I'm talking about. One silver lining continues to be in Kashmir at the moment, that though Islam conquered Kashmir politically, but it never conquered Kashmir culturally. It never, and it can never conquer Kashmir culturally, because Kashmir continues to enjoy those cultural habits which have not faded
Even today, you have Reshmol Saab in Anantnag, where 7 days of vegetarianism is being observed, not by Kashmiri Pandits, by Kashmiri Muslims, even today. There are similar instances, there are endless instances. And I think these are the vacant spaces. And through these vacant spaces, we can reconquer Kashmir. Now, talking about root, we have our temples and shrines as the living symbols of Hindu civilization here. We remember history. History tells us when Zainul Abidin was inflicted with a fatal disease and he had to be treated by Shriya Zainul Abidin expected Shriya to ask for riches, gold, in return for what he did to the king. But Shri Bhatt said only one thing, that we want the return of Kashmiri Pandits with respect, dignity, and honor. And Shri Bhatt asked nothing for himself, but as a goodwill gesture, Zainul Abidin made him a minister in his cabinet. And thereafter, the rehabilitation of Kashmiri Pandits took a firm shape. What was the route employed? The route employed was that we needed one Shriya Bhatt that time to create a situation for Zainul Abidin to come back to the valley. Please remember, there have been 7 or 8 exoduses so far, and all these exoduses have been reversed by Kashmiri Pandits one way or the other. They have adopted the route which was that time possible for them to explore, and this time the route of entry is technology. I'm fairly confident the generation that I'm talking about are tech-savvy generation. They know startups, they know business modules, and I have come across so many Kashmiri Pandit children who are doing great in their business entrepreneurs. They have become great entrepreneurs. And it is this technology which can be used as an instrument for the return and rehabilitation of Kashmiri Pandits. They are back in the valley of Kashmir. I'm fairly confident about it. And for all these things, we need to understand one thing. Constitutionally, Kashmir is a no minority place amongst rest of the country states. The basic idea of rehabilitation back to the valley must start for asking the creation of a legitimate minority space for Kashmiri Pandits in the valley of Kashmir, for the creation of a minority commission, for having the minority rights. After all, a state which says itself a secular entity, which calls itself a plural entity, which says that it is a multicultural state, well, all these things fall flat when this argument stops at Banihal. We need to open up Banihal tunnel for this very argument to enter Kashmir, that it has to accommodate minorities, that it has to give them the same respect and dignity as is being provided to rest of the minorities in India. It must have a minority commission in place consistent with the National Commission for Minorities at the center. Heavens won't fall. We have to regain our territory. Today, there is a hard fact which we need to understand, and which we need to remember, that history is written by conquerors. Unfortunately, we are on the wrong side of the history. We cannot write history. At least we can pool our collective intellect.
we can pool our collective wisdom and create such a situation where the government of the day has to be answerable to Kashmiri Pandits, has to be answerable to all those people with whom injustice has been done. Therefore, the basic premise on which we can get government on the negotiating table, on which we can talk about the terms and conditions for the rehabilitation of Kashmiri Pandits back in the valley, and that is creation of a legitimate minority space for Kashmiri Pandits in the valley. And you need to create a minority environment. You cannot have hybrid terrorism. You cannot have people getting killed day in and day out. We have been reduced as sitting ducks in the valley of Kashmir. Merely one statement that everything is all right will not do. You need to do special thing. You need to talk something special. You need to do something out of box for the minorities of Kashmir. Remember, there are about 800 Kashmiri Pandits there in the valley who weathered all the storms. They did not leave Kashmir, even at that time when the entire Kashmir was denuded of its minorities. They continue to stay there. Even those are under threat. They are facing threat perception. By any standards, government of the day has to be answerable. By any standards, they have to take extra steps. You cannot have 500 Prime Minister package employees there protesting for almost 10 months now. What are they asking for? They are not asking for heavens. They are not asking for moon. They are asking for something which is possible. They are asking for something which government can do. They are asking for something where every human being cannot close his eyes. They had to celebrate Shivratri without salaries. That is unfortunate. We call India as a welfare state, and I'm proud of being part of that welfare state. But how do you define welfare when it comes to Kashmiri Pandits? Does it stop there? I mean, how do you define it? How do you qualify welfare? Does that mean that somebody goes to his home without bread, without butter, without basics? No, that's not done. I think local administration of the day at UT of Kashmir has bungled out on this issue. And from this forum, I don't make appeals. I ask the government of the UT to take stock of the situation. And today, it is not one more killing of a Kashmiri Pandit. It is a civilizational assault. It is an assault on Hindu civilization. They want to finish Hindu civilization because Kashmir is heading for a greater Islamization, you must understand. There is Salafization of local Islam taking place at a great place. Before 1990, the Islam in practice used to be known by the name of Hanafi Islam, which had all the shades of accommodating minorities there. Once desert Islam started coming in, then we heard slogans, Tral bani haini haini mastgul kati bani. Because Mastgul was responsible for burning Nundrishi's shrine, which was symbolic of Sufi Islam there. But at the end of the day, they celebrated saying, Tral bani haini haini mastgul kati bani. We don't want this kind of a situation there. Trar. We don't want this kind of a situation. We have to ensure that minority presence puts a stop to this Salafization of Islam. Only Kashmiri Pandits can put a stop to this because this is in the broad interests of the nation. When in 1990, the
exodus took place, the slogan given by Kashmiri Pandits was, to save Kashmiri Pandits is to save Kashmir, and to save Kashmir is to save India. And this is precisely what I'm saying. We rejoiced the day Modi ji abrogated Article 370, 35A, withdrew special status, brought Kashmir at par with rest of the country. It was a day for rejoice for every Indian, for every citizen. We too were thrilled. We too were rejoiced. We too rejoiced. Our idea was that now everything will be honky-dory there. But unfortunately, that did not happen. And why it did not happen? Because they are in a war mode there. One is assault, killing somebody. One killing, okay, that can be understood. But they are in a war mode. And they have been in a war mode for a long, long time. And from 1990, there has to be, the campaign, the terrorism was militarized. It became a militarized terrorism from 1990 onwards. Therefore, I would be concluding on few things, on few notes. My dear children, whatever you have said, I'm privileged to be part of this conversation which you made. But you need to understand that at no point of time should you ever think of giving up your core constituency, which is Kashmir, as I said. One. And number two, we should all collectively work for the creation of a legitimate minority space there in the Valley of Kashmir to fix our identity, because there's a great dilemma in Kashmir. The dilemma is that the Muslim majority of Kashmir is being linked with the mainstream Muslim minority of India. Thereby, they are enjoying both the benefits as majority in Kashmir and minority in India. And unfortunately, the abject minority of Kashmiri Pandits is being linked with the mainstream Hindu majority of India and depriving us of what we are, what is our status and who we are. Our status is that we are a minority and we must be protected as a minority. And this has to come from not the government, from the civil society and civil society institutions. And use technology to the hilt so that we get our things back. Today, we are living in a world of enlightenment. We are not living in a ghettoized world. We are not living in barbaric times. We are living in this world of enlightenment, and use your technology as an instrument to achieve what was deprived from us. While concluding, I will say, वो वक्त भी देखा है तारीख की गहराइयों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. Thank you, Dr. Ramesh Raina ji, for your pearls of wisdom. So I would like to conclude this panel discussion with the words of Shri B.N. Abhilash ji, who is a very well-known poet of Kashmir. Tapan praznat panni tsui praznav, but yikavatagas zindathavnav. Praznat panni tsui praznav, but yikavatagas zindathavnav. Chapimans aztain askyadrav. Chapimans aztain askyadrav, but yikavatagas zindathavnav. बीएन अभिलाष जी महाराज ऐसे थी ना खड़ा बीएन अभिलाष जी आप प्लीज अपनी सीट पे खड़े हो जाइए वहां पे ही इज बीएन अभिलाष जी ये इनका लिखा हुआ है अ हैंड फॉर हिम प्लीज थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट थैंक यू सो मच नमस्कार एवरीबॉडी हेलो Mr. Bhatt, thank you for being specific in what the needs are. I heard you very carefully. We'll have an offline conversation on the skills need, the coaching institutes. These are
conversations that have taken place before but not implemented. But I do want some feedback. You talked about the lack of scholarships. You talked about the lack of a middle school. Now, we spent several crores on establishing the Jakti Middle School. We've been giving scholarships from North America every year. Can you give some feedback on those programs? Be honest, are they working, not working? Because we obviously want that money to be effective and benefiting the community. It is a fact of our community. In Jakti school, there is two schools, government school. One is a middle school and another is a higher secondary school. One school is adopted the Raj Nehru Ji Aman Kajro Trust. The infrastructure is very good, no doubt. It's a infrastructure, but the student, there is about 200 students in near about 200 students in the middle school, and 150 student, near about 150, 120 students in the Kashmiri Pandit and 80 students in the out of Kashmiri Pandit. The lackness is the government schools is the staff, because the staff is the government employees. So that is why the school is not get such type of success which you have, which we have. Yeah, Mr. Bhatt, just It is. we'll offline that conversation, but I need your help. Yeah. That's the school we are supporting. We have spent several crores. I sit on the board of that school. All the teachers that were sent to that school are local Kashmiri Pandits. So, this is an internal problem that we are not able to get that school to its full potential. Let's partner and figure out how to motivate those teachers so we can make these young kids shine. Yes, it is a good thing if we go for that. If we community management committee is the in private as a, it is a government building. It is a totally government. It is a dependence upon the government. We cannot do anything except we will be the permission of the government. No, So no, it is. no, Mr. Bhatt. We are fully empowered. Let's have offline. Okay, Just ma'am. give Okay, Bharat okay, some sir. offline. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. Thank you, panelists. Appreciate your inputs. And the discussion was really, really. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Yes, I know. Okay. Ahmed. Thank you. Thank you, everybody. So may I request Ashish Kaulji to come up on stage. He will be moderating the next session, Return of Peace and Pandits of the Valley, Role of Media and Lessons Learned. And the panelists, Shri Surinder Ambadarji, Ms. Asha Khosa, Pradeep Dattaji, Jaideep Karnikji. Would you please come on stage? Thank you. Thank you very much. And thank you very much for all of you being very patient. And सबसे पहले
मैं जो यहाँ पे मंच पे आसीन हैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। आशा जी, मैं शायद पहली बारी आज आपसे मिल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, यू बीन एन इंस्पिरेशन। हमारे भाई साहब प्रदीप जी, सुनील अमरदास जी, और खास करके मैं मेंशन करना चाहता हूँ जहाँ की कई सारे लोग हैं जो इन सब को पहचानते हैं, इनके काम से वाकिफ हैं। हम सब आपस में भी एक दूसरे को जानते हैं, पर हमारी कम्युनिटी को कुछ लोगों ने बाहर से बहुत सपोर्ट किया जिनको हम कभी शायद जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और उन्होंने क्या-क्या हमारे लिए किया उस बारे में भी हम नहीं जानते हैं। हम अपने लोगों को अप्रिशिएट तो करते ही हैं, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमको अप्रिशिएट उन लोगों का भी करना चाहिए जिन लोगों को हम पहचानते नहीं, जिनके नामों से हम वाकिफ नहीं, जिनमें एक नाम है जयदीप भाई, जयदीप कार्निक। He is the national editor for Amar Ujala, and under his leadership, Amar Ujala has really become the largest digital platform in the world. And डिजिटल दुनिया के बेताज बादशाह हैं, और कश्मीर को इन्होंने जिस तरीके में सपोर्ट किया है, what I really appreciate about Jaideep Bhai is that he's possibly doesn't know Kashmir at all. Kashmir was not his forte, nor was Kashmir his desk. But the kind of support he has given from his chair is unparalleled, and I request all of you to give him a round of applause. And I wanted to keep this panel very simple. हम सब लोग अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते ही हैं. We'll keep it specific to media. मीडिया का क्या रोल रहा तब, आज और आगे आने वाले टाइम में. कोर फोकस, कोर सवाल सिर्फ उतना ही है कि पंडित्स और पीस कश्मीर में वापस कैसे जाएगा. इससे पहले मैं पैनल की शुरुआत करूं, आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट जयदीप भाई टू टेक 2 quick minutes and say a few words, and then we'll begin our panel discussion. माँ शारदा के चरणों में सादर नमन करता हूं, और सबसे पहले संजय शर्मा जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी आज गोली मारकर दुखद हत्या हुई है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कुछ बात रखूं, और सबसे पहले बहुत आभारी हूं आशीष भाई का कि आज के इस समागम का मुझे उन्होंने साक्षी बनाया और भागीदार भी बनाया. बचपन से एक शेर सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं, घर बररुए जमी फिरदौस अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. और धरती के इस स्वर्ग को आशीष भाई कह रहे थे कि हाँ, कश्मीर मेरी डेस्क में नहीं था, मेरी रिपोर्टिंग में नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में हमेशा था. मैं भारतीय संस्कारों में पला बढ़ा. मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हिंदुस्तान, और मेरे पिताजी भी समाज सेवा में बहुत सक्रिय रहे. और वो मेरे पिताजी मुझे बस में बिठाकर पूरे परिवार को, मेरी दोनों बहनों को, माताजी को पूरे देश की यात्रा पर ले गए थे, और उसमें कश्मीर भी था. तो मैं जब 9वीं कक्षा में था आशीष भाई, तब पहली बार कश्मीर गया था, और दुर्भाग्य कि उसके बाद नहीं गया. लेकिन वो कश्मीर, वहां की गलियां, वो लाल चौक, वहां के अखरोट और वहां की खूबसूरती, गुलमर्ग और खिलनमर्ग की वो बर्फीली वादियां मेरे जहन में हमेशा बसी रही. और जब आप मीडिया पर बोलने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वक्ता भी रहा, बहुत अच्छा निबंध भी लिखता रहा, देश भर की वाद विवाद प्रतियोगिता में जाता रहा. तो मुझे एक अफसोस ये है कि उस समय इस सारे विमर्श का हिस्सा कश्मीर कभी क्यों नहीं बना, जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ताज, हिंदुस्तान के माथे का कलश इस तरीके से जल रहा था, और वहां पर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को बेदखल किया जा रहा था. मुझे इस बात का अफसोस ताउम्र रहेगा कि कोई कश्मीर फाइल चाहिए जो हमारे खुद कश्मीरी पंडितों की युवा पीढ़ी के वासु रैना और वितस्ता को ये बताने के लिए आती है कि उनकी समाज के साथ क्या हुआ है. और वितस्ता, जब झेलम नदी, मैंने देखा वितस्ता का झेलम का वैदिक नाम है, तो वो यहाँ नदी की तरह जब उनके प्रवाह बह रहे थे, तभी मुझे आशीष भाई को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि 2 मिनट मुझे मंच पर दे दीजिए. मैं अपनी डेस्क पर बैठकर, मुझे लगता है कि दरअसल मैं फौज में जाना चाहता था, मैं आपको बताऊं, और फिर मुझे एक विमर्श इस हिंदुस्तान का नजर आता है कि
इस देश में सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई है कि चूंकि स्वतंत्रता संग्राम हुआ और हमने लड़कर आजादी ली जिस भी तरीके, तो आजादी के बाद हमारा एक नेशन बन गया कि सरहद पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मुझे लगता है कि हम जहां पर हैं, जिस मोर्चे पर है, वहां पर भी अगर देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए वो सबसे बड़ी देशभक्ति है और उस देशभक्ति की इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है और वहीं पर कमी हुई है। तो अगर मैं फौज में नहीं भी जा पाया हूं और कलम मेरे हाथ में है, तो उस कलम से अगर मैं देश की लड़ाई लड़ रहा हूं तो मुझे लगता है उस लड़ाई की इस देश को कहीं ज्यादा आवश्यकता है और इस लड़ाई को हम देशभक्ति के नए प्रतीक नहीं गढ़ पाने की वजह से ही हारे हैं। और मीडिया की सारी बातों पर आऊंगा, आशीष भाई के सवालों का जवाब दूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जब भी जिस भी कश्मीरी पंडित भाई से मैं मिला हूं, मुझे लगा कि इतनी विद्वान, इतनी सहज, हृदय से इतनी भोली और इतनी बेहतरीन हमारे देश की एक पूरी की पूरी कौम को बेदखल किया गया और उनके आंसुओं को देखने वाला और सुनने वाला भी कोई नहीं था। तो मैं भी अपने आप को एक अपराधी के तौर पर कटघरे में खड़ा पाता हूं इस देश के नागरिक के रूप में। और इसीलिए पत्रकार के रूप में जब भी मुझे जहां भी कोई मौका मिला किसी कश्मीरी भाई की किसी कथा को सामने लाने के लिए, और इसलिए जब आप आए रेफ्यूजी कैंप को भी लेकर, पुराना नाता है मीडिया का परिचय, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस कहानी को, इस दास्तान को नहीं सुनाएंगे तो हमारी दास्तान सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा आगे जाकर। और ये वही बात है कि जब तक हमारे घर तक वो आग नहीं आ जाती तब तक हमको उसकी आंच समझ में नहीं आती, लेकिन जब तक दूसरे की आंच को समझकर हम उसको, उसके ताप को सहना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा घर जल चुका होगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं दो तीन ही बातें कहना चाहता हूं इससे पहले कि पूरा विमर्श शुरू हो, उसको लंबा नहीं करना चाहूंगा, शुरुआत ही सुबह की देर से हुई है। मुझे लगता है कि दो बातों को हमें अपने वेदों से और शास्त्रों से उठाना चाहिए, न दैन्यम न पलायनम। हम दीनता भी नहीं दिखाएंगे और हम पलायन भी नहीं करेंगे, ये तो आपने किया है। लेकिन जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने इतिहास लिखा है, तो वीर भोग्या वसुंधरा भी एक बहुत बड़ी इस हिंदुस्तान की बात है। और जो वीर है, जो अपनी जमीन के लिए और अपने हक के लिए लड़ना जानता है ना, ये भविष्य उसी का होता है, भविष्य उसी के द्वारा लिखा जाता है। आप ये विमर्श आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के सेमिनार कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल कश्मीरी पंडितों को इकट्ठा करके बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है आशीष भाई और सारे लोग कौल साहब जो आप इससे जुड़े हैं। लेकिन इस तरह की लड़ाइयों की जीत इस तरह के वातानुकूलित ऑडिटोरियम से नहीं मिलेगी। ये विमर्श जरूर आगे बढ़ेगा, ये हक की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है और जमीन पे ही लड़ना पड़ेगी, ये कड़वा सच है, इसको समझ लीजिए। आपके साथ लोग सहानुभूति दर्शाएंगे, लेकिन जब जमीन पर लड़ने की बारी आएगी तो खड़े आपको रहना पड़ेगा। आपके साथ कलम के साथ हम खड़े रह सकते हैं, बहुत सारे लोग आकर जुड़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, लड़ाई वहां नहीं पहुंचेगी जहां पहुंचनी चाहिए। हम केवल फिल्में बनाएंगे, फिल्मों की कहानियां सुनाएंगे। एक और अफसोस इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीर फाइल को 1000 करोड़ या 5000 करोड़ का क्लब नहीं मिला तो भी ये हिंदुस्तान दोषी है। इससे पता लगता है कि हम लोग अपने सुखों में और अपने कमर्शियल सेटिस्फैक्टरी कंफर्ट जोन्स में इतने ज्यादा जा चुके हैं कि वो मसले जो हमारे अस्तित्व का संकट बनते हैं, शायद हम उनको भी सुनना नहीं चाहते। मुझे इस कम्युनिटी को देखकर यह लगता है कि शोला दहकता दामिंदा रहे, शोला दहकता दामिंदा रहे, दुनिया ने लाख चाहा फिर भी हम जिंदा रहे, और भीख भी मांगी है तो इस खुददारी के साथ कि देने वाला ता उम्र शर्मिंदा रहे। मेरा दिल दर्द से भर आता है जब इस चीज को सुनता हूं और मुझे लगता है कि क्यों नहीं हम अपने हक के लिए तब लड़े, और तब भी नहीं लड़े तो अब भी देर नहीं हुई। 33 साल में झेलम में जितना भी पानी बह गया हो, लेकिन अगर हमारी जमीन है, हमारा हक है, हमारी संस्कृति है तो लड़ना चाहिए। और जो लोग इसके लिए नहीं लड़े हैं वो सब जो तटस्थ रहे हैं, जो कहा जाता है ना कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध तो लिखा जाएगा। मैं भी आपको इस कटघरे में अपने अपराधी के रूप में पेश करता हूं कि अगर हमने इसको नहीं लिखा है, सामने नहीं लाया है, आपकी लड़ाई में हम शामिल नहीं हुए तो हम अपराधी हैं, लेकिन ये अपराध लंबे समय तक नहीं जाए, हम भी आपके साथ खड़े होकर लड़ें, इतना ही चाहता हूं। मीडिया की बात पर आगे आऊंगा, लेकिन इस बात के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं पैनल डिस्कशन के लिए कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू भी किसी की आंख से निकल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू भी किसी की आंख से निकल सकते थे, और खबरें तो इतनी थी इस देश में कि खून से छपकर भी अखबार निकल सकते थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
Thank you very much. Thank you. Thank you. Grateful. Thank you. I'll begin with, I've set the context right now. I'll begin with ladies first, of course, with Asha ji. All of us have, in media specifically, we've grown up knowing the kind of work that she needs no introduction, but for the fact that, she was one of the very few people who documented what was happening. और आज आशा जी हैं या मनोज भाई हैं जो आज यहाँ होना चाह रहे थे पर किसी वजह से नहीं आ पाए. आज हम जब प्रूफ्स की बात करते हैं कि तब किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया, गवर्नमेंट इतना ज्यादा डिनायल में थी कि कुछ ही लोगों की का काम आज सर्वाइव करता है एज अ रेफरेंस, क्योंकि आज इस देश में जिसमें हम रहते हैं हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, लोग प्रूफ मांगते हैं. तो उस प्रूफ के रूप में इनका काम आज हमारे सामने है. तो मैं आशा जी से स्टार्ट करना चाहूंगा. मैं जो चाहूंगा आप बताएं कि 1990 में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दुनिया इतनी बदल गई कि लोग पूछते ऐसा हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है. हम तो फिल्में देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, आज कुत्ते को भी लात पड़ती है तो नेशनल इश्यू बन जाता है. इतने लोग निकल गए, ऐसा नहीं हुआ, आप लोग झूठ बोलते होंगे. तो बैक इन 1990, where were you? I wanted you to take us back to 1990. What was happening and how did you approach your work that time, ma'am? I think fine if I sit here and talk. No, that's fine. That's okay. No, it's a conversation. So thank you very much for inviting me here, because I especially thank people who must have thought about me, because my initial work is not on social media, because then there was no social media. And that is the reason a lot of people say press ne ye nahi kiya, press didn't give due coverage, because the new generation approaches everything from the perspective social media. Only when they do some research, they would know that there are people who have written about it. A lot of people, it's not only me, other people have also written about it. But the way it was unfolding was very different from how you perceive today or how it is shown in the movies. By the way, I'm not saying that movies showed anything wrong. It's an A-class movie. If there's any single action that has changed the perception about Kashmiri Pandits' exodus in India, that is Vivek Agnihotri's The Kashmir File. And as a journalist, I can vouch for it that not a single inaccuracy has crept into it. But again, I'll say what I and my colleague Pradeep, and we have worked together at some time in Kashmir. So what we have seen and what we are privy to, that film was just tip of the iceberg. It's tip of the iceberg. I mean, I could predict. My mother was sitting me. I'll tell her, I mean, she was like this. I say, Mummy, ab ye hoga, because I knew what had happened. So thank you, Vivek Agnihotri ji, for such wonderful film. And that changed the perception. Now we don't have to tell people, "Arey, aap log kyun bhag gaye wahan se? Aap kaise aa gaye?" Nobody asks us these questions. People, जैसे भाई ने अभी बोला कि अपराध बोध का feeling hota hai unko. They feel guilty that we didn't stand with them. Thank you for that. But at that time, to the more specific question, I was based in Srinagar. In 1989 summer, when people were were about to move out of Valley, I had been transferred I got a job in Kashmir, and as a young reporter, I was mighty excited. And it was all Kalashnikov. First thing I did after reaching Kashmir was to learn the spelling of Kalashnikov. Remember, there was no, we had to go consult a dictionary. There was no social media then. It was terrible, terrible. I mean, I have people, I'll be wearing normal jeans and a shirt and normal, like a jhola jholi journalist. So people would stop me and say, hai dukta kachi dukta. So I would fight with them momentarily, and then I'll go and buy a dupatta. So it was a terrible time there. A lot of people will say, I mean, like yesterday I saw Mr. Anupam Kher. He was trolled for what he said. It's very unfortunate. I don't know why we have become such cynics. He was trolled, and probably what I'm going to say today is also material for which I can be trolled. Anyway, since you all have invited me here, I must speak the truth. And very honestly, I must give you the honest feedback that I have it. At that time, मैं बहुत brief बोलूँगी because time नहीं है. At that time, Kashmir was boiling. मैंने एक दिन ऐसा नजारा देखा है that there's a bus standing. I think it was Rubia Saeed was exchanged for terrorists.
So the bus was in the Lal Chowk, and there was all Nara Takbir Nara the, and the bus had to be moved because they wanted to put up some JKLF flags. There was no need to push the bus. People just nudged it and it moved. That was the amount of people on the road. And I was stuck in a hotel. We were all journalists sitting there. So people said, how will you go home? I had to go to my aunt's place downtown. So somebody accompanied me and I walked and gali gali se main nikal ke gayi, dupatta upatta aise od ke. So Kashmir was on boil. Everybody knew something is happening. Everybody knew there is lot of arms and ammunition in everybody's home. People were very excited about it. And later I realized, yes, one thing I saw, women were singing One Woon on the roadside. Ghazi. Ghazi was the reference they were giving to all those people who had gone abroad. People were very happy about saying Nechu Nechu Gomu train in Karne, which meant that they have crossed the border and gone to terrorist camps. So having said that, looking at things from a distance, in a perspective, I can realize that those women didn't know what they are, getting into. Some kind of dream was being sold that something is going to happen in Kashmir, which will be very good. If you ask them Azadi, of course, religion was a major factor, but people who were involved in it at that level, public level, galiyon mein jo gaane ga rahe the, was vanwoon jo kar rahe the, they had no idea that they are going to soon see killings, young people dying early, getting into graves. Those women had no idea. So at that level, from a distance, now I can say, it is not only a common Kashmiri Muslim. Of course, religion was there, that I take. It is not only that who pushed us out. Of course, they stood by thinking that they have gone away for winters, they'll come back, or they may not come back. They always wanted India, they have gone. But even they were not aware that what is going to happen to us. Think of it. While we must have a grudge against our neighbor who stood silent while that man was being shot at, killed inside the drum. You all have seen rice drum. We have to be angry at him. But at the same time, please understand that that person's gun has come from Pakistan. That person has been trained by Pakistan. So that is also a factor. I cannot only blame my neighbor that you stood silently. What could he do? What could he do that time? I'm speaking for, I am trying to tell you that there is a silent majority in Kashmir, which are sometime here and sometime there. And how that silent majority was changed. People were silent. But I'll tell you the blame, what I feel, is entirely on the government. The government allowed pro-Islamic, pro-Azadi processions in Srinagar. And people thought the government of the day is with these people who are the leaders of the procession. So, hello, Charles, sorry. Thank you. Yeah, it's working. So, what I'm saying is the government at that time was totally ineffective. They misunderstood the situation. They underestimated the situation. So I blame the government of that time also. Whether that was in center, I think it was VP Singh, totally underestimated the situation. And Farooq Abdullah. I have no idea why we Kashmiri Pandits do not blame him. Do not say that let there be an inquiry against this man who was the chief minister at that time, elected chief minister. It was his responsibility. Sorry? No, I'm saying institutionalized blaming. Let us put a petition, say that there should be a white paper against him. We just give him gali. We don't, see, we give him gali. Yeah, you institutionalize it. We are randomly talking, oh, chor hai, wo kuch nahi kiya. Arey, kisne nahi kiya? Usko pakdo bhai. Sabse pehle, Farooq Abdullah was in charge. We should pinpoint the blame instead of just... Yeah. No, but... Yeah, sure. Yeah, of course.
He was a constitutionally elected person. He has to be blamed, no? Isn't it? He cannot flee. Whatever. Yeah, whatever. There should be an institutional demand. There should be demand from forum. Let there be a white paper. Let him come clear on that. So he is one of those guys who will come here and sing a bhajan and we all will be, ha ha ha, how good he is. He'll go to some other place, hata hata, mudha, kya go. He is enjoying himself and he's not getting blamed for what he did to people of Kashmir, people like us. Also, people like Bitta Karate, I will tell you a personal incident. Am I being too long? Okay. I was at a function in Delhi, Indian International Center, some conference, peace conference. They used to have a lot of them. So Yasin Malik was there. You know, he was wearing a designer suit. I have never worn designer thing. He was showing me, Gucci, Armani. I said, okay, good. Yeah, he was wearing Armani. I think he was showing off. I said, oh, very good. Then he came to have lunch and I didn't feel like having lunch with him. But anyway, I'm a journalist, so I will talk to anybody because my profession is to get information. So I talked to him about his wife and all, who's a Pakistani. And he declared in front of everybody, so what I'm trying to tell you is he was that, he was being loved by the government, the authorities, he was being kind of groomed. I don't know what they were doing with him. So what signal does that throw to the people back in Srinagar, Kashmir, for example, whom I call a silent majority? If Yasin Malik is being feted and treated and partied by Indians in Delhi, he wears a Armani. What is a man in Srinagar who doesn't know what is happening to, who might think, yeah, kuch Islam ka ho raha hai, haan batte chalenge, koi baat nahi, aa jayenge, nahi aate, koi baat nahi. What is the signal he is getting? He gets a signal that the powers of the day are with Yasin Malik. So I better also show my loyalty to him. That is how the tide was turned in Kashmir. Believe me, people like me and my husband, who's no more, he was from Kerala. We had to one day ask this Rajesh Pilot, aap halat dekhiye, at the end of the day, journalists should get a strip. Then there was no social media. A printed strip, itna wahan pe goli chala, yahan itne log mar gaye, strip. The list of incidents. We were the last to be given. Sometime they will not give us. So we call them, अरे हमको क्यों नहीं देते तुम लोग? बोले तुम तो अपने हो ना, ये इनको दे देंगे पहले. Basically, we were being denied information. Systematically, we were being denied. I was being stopped from doing my profession. So just imagine the central minister comes there, Rajesh Pilot, he's sitting in guest house number 5. He calls me and my husband. He says, what can I do for you? Tell me. And my husband says, oh, you know, we should get our press notes in time. And he was like this, you know, he expected, I don't know what he expected us to ask him. So that was the desperation of people like us. That is how the environment in Srinagar had changed. Kashmiri Pandits ke bahan rehne ka sawal hi nahi tha. I am thankful, when I think in the long term, I am thankful that people left that place. Because today, what I and Pradeep are privy to so many things, people who stayed back. For example, people of Pradeep's community, some of us are privy to such horrible things happening to the women, and somehow we are trying to work out some stories. So I congratulate your parents, your grandparents who left that place because they had that sixth sense that things are not okay, we should not stay here. And media, why media didn't report? You will say media didn't report in that way. There was a confusion because people were living in batches. Bhai ne bhai ko nahi bataya hum ja rahe hain. Isn't that a fact? People didn't tell anybody. Whatever. Fear, extreme fear. It was extreme fear. My guess is it was extreme fear. And I'm saying on the basis of my information, my research. Extreme fear. People do weird things when they're afraid. Andhere mein kyun dar lagta hai? Bhai andhera hai, it's not going to eat you. It is the fear. They had extreme fear. People had undergone experiences which are terrible. They didn't tell. My own cousin, he was kidnapped. He was in police. He was abducted by terrorists. He knew those coding. You know, they have in police coding.
Morse coding. Probably they want. He has not told anybody the story, but I can guess they wanted to learn from him. Somehow something happened and he had to be shunted. तुम जाओ इसको ऑटो में बिठा के पट्टी बांध के घर लाया. 2 दिन के बाद he comes home. His father asked him what happened. He said, no, they were friends. And the next morning, he, his wife, 2 children, they leave the place. They leave the place, and his family doesn't know what. The other brother has gone on his own. He was in Central Telegraph. He also left. Things happen like that. So there was no exodus per se that एक दिन लाखों लोग आ गए. जैसे पहली मूवी में दिखाया गया था कि ये बसों के बसें आ रही है. People took individual decision and they were right. They took the right decision. Yes, I'll wind up now. If any question, I'll answer later. Yeah. We'll come to that, sir. We'll come to that, sir. Amarnath ji. Thank you very much, sir. As I requested her, I wanted you to take us back in 1990, what you were doing that time, how you saw things were happening, and today, when we sit here today, when we sit in 2023, and when we look back, today our habits of media, the way we understand media, the impact that media creates is totally different. Now, how do you see what was happening in 1990 from a Indian perspective? कि दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू में बैठे हुए लोगों को कैसे वो सिचुएशन रीड कर रहे थे थ्रू मीडिया? टेक अस टू 1990. Thank you. मैं जिंदगी के उस दौर से गुजरा हूं जहां रोते हुए मैं खुद को खुद ही चुप करा रहा हूं. ठीक, ये ठीक. मैं ये मानता हूं कि रुद्रबाला का जो दामन है और जो कंकर उसके आसपास हैं अभी भी रक्त बिंदु लगे हैं. ये भी मानता हूं कि जो हमारे पूर्वजों ने वन खड़े किए थे वो भी अभी जख्मी हैं और वितस्ता अभी भी मैली है. एक दो बिंदु जो अभी हमारी जो आशा जी बता रही थी, एक तो जब हम कश्मीर में थे, जो मैं कर रहा था शायद नहीं बता पाऊंगा, फिर कभी बताऊंगा. तो जब कश्मीर में थे तब 2 थे वहां, और एक होप थी और एक आशा थी. तो मैं आभारी हूं आशा जी का भी, क्योंकि बहुत जब तनाव रहता था तो ये हमको कॉफी पिलाती थी एमएलए हॉस्टल में. शायद इनको याद हो कि ना हो. तो आप श्रीनगर आएंगे तो अब ये मेरी बारी होगी. जयदेव जी बहुत धन्यवाद आपका. यू आइडेंटिफाइड विद आवर पेन. ये जो हमारे मित्र प्रदीप बैठे हैं, ये पहले मुझे फॉलो करते हैं, अब मुझे लीड करते हैं. आदतें बिगड़ जाती हैं लोगों की. अभी एक तो आप जो जीकेपीडी और जम्मू कश्मीर विचार मंच ने ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, किसी ऑब्जेक्टिव से किया होगा और ऑब्जेक्टिव सामने है. इनका बहुत बहुत आभारी हूँ. धन्यवाद है आपका. आपको बधाई भी देते हैं इस प्रकार का प्रोग्राम करने के लिए. मैं अपने छोटा सा अपने परिचय में ऐड करता हूँ. मेरा जो परिचय है उसके अतिरिक्त 2 शब्द और ऐड करता हूँ. संजय जी मुझे पानी चाहिए थोड़ा. थोड़ी देर में कनेक्ट करूंगा इस बात को.
1947 में जब कबायली रेड हुआ तो नॉर्थ कश्मीर में जो सनातनी थे बहुत मैसेकर हुआ, और मैं भी एक विक्टिम हूँ। मेरे दादाजी को तब असैसिनेट किया गया था। पंडित रामचंद्र अंबारदार, राहुल पंडिता की पुस्तक में आवर मून हैज ब्लड क्लॉट से पूरा चैप्टर है। दूसरा कि मैं एक गुरुकुल से पढ़ा हूँ। उस गुरुकुल में हमारे एक मार्गदर्शक जो रहे हैं माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर, उनका एक कोट है, आवर प्लेज टू द फ्रीडम ऑफ द कंट्री इज थ्रू डिफेंडिंग रिलीजन एंड कल्चर। और ये मेरा विश्वास है कि हिंदू कुश से जो काले बादल आए, हिंदू कुश से जो तलवार निकली है, उसी ने सोमनाथ का डिमोलिश किया, और उसी ने 13वीं सदी में आप देखेंगे तो शारदा लाखों पुस्तकों को भी वहां दफन कर दिया, जलाया गया। मेरा शिवाइट सनातन सिविलाइजेशन का केस पिछले 700 वर्षों से है। ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है, इट इज अ सिविलाइजेशन ऑनस्लॉट एंड आई एम विक्टिम ऑफ दैट। इसको वापस करना है तो फिर उसी प्रकार की व्यूहरचना बनानी पड़ेगी। इससे पहले मैं और बात रखूं, एक दो बातें जोड़ दूंगा आशा जी के साथ। एक तो जब फारूक अब्दुल्ला की बात आती है तो मैं यहाँ, बुद्धिजीवी बैठे हैं, समाजशास्त्री बैठे हैं, हमारे राकेश जी बैठे हैं जो बहुत विषयों के जानकार हैं। जब आतिशी चिनार में हमको ये कहा जाता है कि आप 5th कॉलमनिस्ट हैं, और सबको मालूम है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और 5th कॉलमनिस्ट का जो लिटरेरी अर्थ है आप सब जानते हैं, शायद एनिमीज एजेंट। अगर मैं 5th कॉलमनिस्ट हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, इसका मतलब क्या है? मैं एनिमीज एजेंट हूं। मैं किसका एजेंट हूं? मैं भारत का एजेंट हूं। यानी कि कश्मीर के सियासी गलियारों में मैं भारत का एजेंट हूं, और शायद पिछले 70 साल से हमने कॉन्टेस्ट नहीं किया। एक आशा जी कह रही थी कि उस दिन जब बीड हुई थी, 13 ये रूबिया शहीद का कांड चल रहा था, 13 दिसंबर 1999 को जब रूबिया छोड़ दिया जाता है, तो फारूक अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने रूबिया शहीद को क्यों, रूबिया शहीद के एवज में उन टेररिस्टों को क्यों छोड़ा? वो कहता है कि मैंने नहीं, भारत सरकार का प्रेशर था, मैं आई वॉज नॉट विलिंग। अगर भारत सरकार उनको प्रेशराइज कर रहा था, उस दिन उसने रिजाइन क्यों नहीं किया? उस दिन क्यों रिजाइन किया? 18 जनवरी को जब जगमोहन वहां आया था। तीसरी बात, राकेश जी, इस पे थोड़ा सा आप मेरी मदद कीजिए। एक टेररिज्म के इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर में एक नैरेटिव है कि 87 में ये जो रिगिंग हुई है इस कारण से टेररिज्म हुआ, हालांकि ये बहुत ही झूठ है। 87 के रिगिंग से शायद एज ए कैटालिटिक एजेंट उस सारे प्रोसेस ने एक्ट किया होगा, ये हम मान सकते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं राकेश जी कि 87 का जो रिगिंग था, ये शायद रिगिंग था कि ये डेलिबरेट प्रोवोकेशन थी? ये उस डिजाइन में एक ऑलरेडी तय किया गया था, हम रिगिंग करेंगे, उसे प्रोवोकेशन होगी, और ये सारा प्रोसेस कैटेगोरिकली उस सारे एजेंडा में फिट होता है। थैंक कल सदगुरु जी आए थे और उनका आभार प्रकट करते हुए मैं शायद इतनी बात कहूंगा कि उन्होंने जो बात रखी है कि वी नीड टू कैच अप द नैरेटिव। शायद इस सेशन के बाद भी शायद डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी हमको और गाइड करेंगे, पर मैं एक साधारण सी प्रार्थना करूंगा कि मैंने तय किया है साहब, मैं तो अपना कश्मीर नहीं छोड़ूंगा, अब आप तय कर लीजिए। कुछ भी हो, मैं तो अपना कश्मीर नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं, मैंने भगवत गीता में मुझसे वचन किया गया, मैं तो 7 जन्म ले सकता हूं, 7 जन्मों तक रहूंगा, दोबारा रिबर्थ ले लूंगा, कश्मीर नहीं छोड़ूंगा।
ये कश्मीर सनातन का है, ये कश्मीर शिव सनातन का है, ये मेरे पूर्वजों का कश्मीर है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में आज के तारीख में हम सब ये प्रण करें कि नमस्ते के बदले हम अपना कश्मीर नहीं देंगे, मैं अपना कश्मीर नहीं दूंगा। इस प्रकार का वक्तव्य हमने कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। शायद आप अपने जो रिंग टोन होता है उसमें भी कर सकते हैं, नमस्ते के बदले ये भी कह सकते हैं। ये जो सिविलाइजेशनल लड़ाइयाँ हैं ये इनका समय में हम नहीं बांध सकते हैं। तो आज जो अभी डॉक्टर सुरेंद्र कोल ने एक पुलवामा का एक हादसा सुनाया, असल में दो प्रकार के कश्मीर हैं। एक तो 2019 से पहले का कश्मीर और 2019 के बाद का कश्मीर। मैं अभी शायद यहीं रुकता हूं कि 2019 से पहले का कश्मीर क्या था। मैं समझता हूं आप सब बहुत मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं कि सैकड़ों की संख्याओं में टेररिस्ट ग्रुप्स थे, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और हवाला से पैसा आता था। वहाँ 90s में भी और 90s के बाद भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेवल के ऑफिसर्स कोरियर कर रहे थे, वो हार्बरिंग कर रहे थे और वहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट उनको था, तिरंगे का अपमान कर रहे थे। कश्मीरी पंडित उनको बर्दाश्त नहीं होता था, राजा सनातन नहीं बर्दाश्त होता था। इसके अतिरिक्त अगर आप कहेंगे तो मैं 1 घंटा ये बोल सकता हूं कि 2019 से पहले वहां क्या क्या था। तो 2019 के बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा विराम लेकर दोबारा बात करूंगा आपसे। धन्यवाद। Can this is this? Yeah, fine. So, Pradeep, I better stand. So, where are you? Okay, come. So the point is again what I asked Asha ji. Take us back to 1990. You've been a journalist all through, and you need no introduction of the kind of work that you've been doing. From today's perspective, from 2023, when we look back to the media back then, the kind of reporting that was happening, what were you doing that time, and the kind of work that you did that time, and specifically from today's perspective, how do you compare? What is it that possibly was not done that time that you think should have been done and can be done now? Thank you, Ashish ji. Thank you, Utpal Kol ji, for making me a part of this program. हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत हाल बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में जलती रहनी चाहिए। When Vitasta was saying that, I called my sister also because I wanted to pass on this to my younger sister also. I felt so good. That was the time when I thought about this thing. I had often been asked one question. तुम्हें क्या ज्यादा पंडितों का दर्द है? That you keep on talking and writing about them, और ज्यादा तुम चिल्ला के स्टोरी करते हो। तो I asked them one question. मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ अक्सर तुम कहते हो कि पैगंबर कहता है कि पड़ोसी का हक बहुत ज्यादा है। पड़ोसी खाली पाकिस्तान नहीं था, पड़ोसी तो तुम्हारा कश्मीरी पंडित था। तुम खामोश रहे, तुम अपने पैगंबर की बात भूल गए। मुझे अपने गुरु की बात याद है। मेरा गुरु कहता है कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के जा तक, रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर। कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, उस तरह से कौम का देश का कर्जा अदा हो रहा है। सर आप कल वॉर की बात कर रहे थे, वॉरियर थे। स्ट्रेटेजी बनाने के साथ साथ वॉरियर की भी जरूरत पड़ती है, और मुझे उस गुरु की बात याद है। When we talk about two things, because मुझे इसलिए आपने पूछा तो मैं थोड़ा 47 पे जाऊंगा, हालांकि अमरदास जी ने थोड़ा सा टच किया है। मुझे लगता है कि पहली बार अगर किसी ने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया था पाकिस्तान में, दैट वाज ऑन 22 अक्टूबर 1947। पहली बार हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया था और पहली बार कश्मीर बिकेम एन इश्यू। पहली बार उसने अपने डिसेप्शन के थ्रू कश्मीरियों को बिट्रे किया गया था, एंड ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट। And till date, we people had been doing the same thing, glorifying and eulogizing terrorists and separatism. There was incentivization of terror. वो सिलसिला चलता रहा, उस समय शुरू किया। और अब मैं बताता हूं कि 19 जनवरी की अगर बात करें तो 19 जनवरी में भी वही हुआ। So how there had been a denial of the genocide, because simply that was ossified in the collective psyche of country. The three tools they used, I call it an ABCD.
Why I call it an ABCD, look at A. A stands for the appeasement of those Islamist radical elements. They didn't spoke against them. B stands for the blame game, that was against the Governor Jagmohan. They said that he was the one who has engineered the exodus of the Kashmiri Pandits. But the moment you start blaming then Governor Jagmohan, obviously you are going to give a clean chit to Pakistan and Pak proxies, what you had been doing. And the D was something which you have seen after the Kashmir files, how they started discrediting your pain and how they started demonizing the victim. Victims were made villains, and today the winds of change have started blowing. The two minuscule minorities sitting here, and we are discussing things. मेरे ख्याल से आज से कुछ साल पहले here, Yasin Malik would have been sitting here and preaching you peace, and you would have been listening to him. So that is what really has changed. All of them are there where they should have been long back, cooling their heels behind the bars. And I don't hesitate calling him the terrorist, because for all these years, he was projected as someone, the Messiah of peace. And the second is, one I talked about, Guru Tegh Bahadur Ji. Other is my guru here. And this is called the attitude of gratitude towards the community also. If I'm standing here and talking in front of you, and whatever words and vocabulary I've got, it's because of her. I still remember the words when I joined journalism. She said, 4-5 word लिखते हो, अंग्रेजी भी सही नहीं. तुम करते क्या हो? मैंने कहा, मैम, जब मैं 5000 लिखता हूँ, तो you edit it and you make it 300-400 words. And that those days it was a print medium, and we used to be very happy to see that anchor piece appearing on the newspaper. I said, if I'm going to write 300 words, you will make it a brief. तो मैं तो दिखूंगा नहीं कहीं. So she said, Sakar urge. And that urge, I realized over the period of time that I have to write. So that attitude of gratitude is really very important. जो आपका गुरु होता है, उसकी बात आपको याद रहती है, और मैं हर इस मौका जहां मिलता है, I keep on talking about that. My father often says. और दूसरी चीज ये है कि which I really feel, that's very important, because when I talk about 1947 when the raiders came over to this place, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं, जब आप कश्मीर जाते हैं, कभी भी किसी को मौका मिलता है, तो 3 चीजों से आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान में चले गए. एक, जब आप उस तिरंगे को लहराता हुआ देखते हैं, when you see the tricolor fluttering, you understand. The moment you land or you go by road, you say that you are in Kashmir. The second is when you see that soldier on the ground wearing that uniform. Because if you see the tricolor fluttering, it is not because of the blowing wind. It is because of the last breath and the supreme sacrifice of the man there on the ground. And third is because of my turban. When you see the star standing there, because wherever I go, somebody said we should take our Deepji said that Shalini ji, that we should take our Kashmir along. I said, wherever I go, I carry my country along. I don't hesitate, because there are so many people, because they try to glorify terror. Till date, I think that many people love to be with the power, they forget leaders in the past. I always say that the biggest blot that had been on the Sikhism, that was the killing of Indira Gandhi. And I say it on record every time. Why I say this thing? Because when we talk about Sikhs means loyalty. And Byan Singh was the bodyguard, he was not supposed to kill Indira Gandhi. Second, the blood group of Byan Singh was similar to that of Indira Gandhi. He was supposed to give her blood in case of any problem, not to spill her blood. And the third thing which I say is that many a times Indira Gandhi was asked to remove Byan Singh from the inner circle of the security, because after Blue Star they really wanted to do so, but she didn't do so. And my father says, because if you hear that people like Pannu and others, my father says you can take out the Sikh from India, but you cannot take out India from Sikhs. And we carry India in our heart. And very rightly said, I think we should have been invited long back. गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता उस वक्त भी कुछ हमसे सुना होता. When Kirpa Ram Das ji can go to Guru Tegh Bahadur Ji, you should have made friends. You are not to look for the friends anywhere else. You are in my DNA sin. It's not that I will be doing any kind of a service when people say that I do speak for you, and there are other connect, because you also speak for India and also speak for India. That is also the Sutradhar that is connecting you and me. And then I think very soon we'll be forgetting Sanjay Sharma also. He'll become a part of statistics. Tomorrow we'll get engrossed in something else and we'll not be talking about that. We have got the Shiv, we have got the Sharda, and we say, Akhand hai, Prachand hai, Asuron ka ant hai, Kailash mein virajte, wahi ang sang hai. You don't need anybody else. जब वो अंग संग है, शिव और शारदा की शक्ति अंग संग है, we can do anything.
Coming to your question, you said what actually, I still remember, because those days I was in school, I was not in journalism. I remember we had been during winters, we used to come to Jammu as usual, what normally everybody used to do. There used to be winter vacation. We were here and we saw near it, there was a railway head. There were all those Kashmiri Pandits putting up there. और उन्होंने क्या किया था कि that instead of those walls, they partitioned that hall with the saris. And everybody used to go as if they are watching some kind of an animal sitting there. That it was a kind of a picture देखने के लिए जा रहे हैं. So we also saw, I still remember, after so many years I felt, he said, हम अपनी बात जब बयां करते हैं पत्रकार से, and I remember I worked with the print media, there was a direction from our editor. He said that Kashmiri Pandits are no stories. ये बहुत हो गया रोना धोना. You go for the better, because they were looking for the tear jerkers from Kashmir. Nobody wanted to talk about the tears of Kashmiri Pandits. That was the direction. I really felt bad. Despite that, somehow, some way or the other, I always used to look for the reason to write a story. अब देखिए सबसे दुखद क्या होता है कि मॉर्निंग में when you, एक तो अखबार आप खोली तो पेज नंबर 2 की कोई वैल्यू नहीं होती. इट्स अ साइंटिफिक रीजन. यू लुक एट द पेज 1, यू लुक एट द लास्ट पेज, और अगर ज्यादा कुछ इंटेलेक्चुअल होंगे तो वो एडिटोरियल पेज या ओपेड पेज पढ़ते हैं. दे नेवर गो फॉर द पेज 2. बट कितनी दुखद बात है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज एवरी टाइम इन एक्सेलसियर दे ओपन एंड दे लुक फॉर द पेज नंबर 2, बिकॉज डिसेमिनेटेड कम्युनिटी इज लुकिंग कौन हम में से जिया, कौन हम में से मरा, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ अ कनेक्ट यू आर हैविंग. Nothing can be more painful than that. And it's about the space. When you talk about the home, it's not about the home. कभी कभी बात करते हैं कि हम 3 मंजिला मकान छोड़ के आए. 3 मंजिला मकान में भी मेरा एक स्पेस होता है, मेरा एक कोना था. मेरा एक कोना था, ना जाने किस कोने में रह गया. वो अपना था, नफरत की आंधी में बह गया. कोने की एक दीवार पर भगवान कृष्ण की तस्वीर, मैंने कई बार अपने दोस्तों के घर पे देखा था. वी यूज्ड टू गो एंड स्टडी देयर. कोने की एक दीवार पर भगवान कृष्ण की तस्वीर साहब, और बगल में गावस्कर, और सामने किताबों का बक्सा, बक्से में खजूर जो लाया था नजीर. कोना तो छूट गया, ऐसा छूटा घर की कश्मीर से रिश्ता भी टूट गया. तो कहता है कि चुपचाप गुमसुम मैं इस कोने की तलाश में रहता हूं. मेरा भी एक कोना था. मैं उनसे ये बात कहता हूं, किनसे? उन पत्रकारों से जो इनसेंसिटिव हैं, दोज हु डू नॉट वांट टू लिसन, बिकॉज वो आपको सुनना नहीं चाहते हैं. दे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ काइंड ऑफ अ रिबटल एंड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट that they will not be talking about, because they had made up their mind that they are going to glorify those terrorists, they are going to glorify those separatists, they are going to treat villains as victims, and victims will be demonized, because they will come out with one story or the other story. That's what they will be doing. So they will not be listening to them. तो सब छूट गया साथ, छूट गया हाथ, छूट गया, टूट गए सपने, छूट गए अपने. मैं क्यों उनसे वो बात कहता हूं? मेरा भी एक कोना था, आज भी मैं उसी कोने में रहता हूं. That is where I stay. So when I say, I think it's very important taking the battle there. कल कोई शख्स आए थे, कह रहे थे बंदूक उठा दीजिए. काश मैं वहां प्रेजेंट होता उस समय. मैं कहता साहब आपने तो बंदूक छोड़ के टीवी कमेंटेटर बन गए और इनको कहते हो बंदूक उठा के वहां जाइए. कितना आसान होता है कि आप देखिए आके सरमन देके चले जाइए. सिचुएशन देखी नहीं, बोल दिया आप बंदूक उठाइए, पत्थर मारेंगे तो गोली चलाइए. अरे साहब जहां बंदूक उठानी थी आपने तो सरहद की रक्षा की नहीं और सरहद छोड़ के आ गए. और एक साहब आए कि मैं अकेला जंग लड़ रहा हूं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता था जो सुबह बोल के गए, मेरा परिवार है. मैंने कहा जनाब आप तो एक बार जंग लड़ते हैं, आपके लिए हर रोज मैं टीवी पे जंग लड़ता हूं. कभी आपको इनाम मिलता है तो कभी नहीं मिलता, तब भी मैं जंग लड़ता हूं. सो वी फाइट द बैटल. सो वी आर नॉट समथिंग व्हिच आई एम सेइंग. और ये बहुत मुश्किल होता है करना जब आपके परिवार के सदस्य रहे होंगे. मैम को मालूम है कि माय अंकल वाज अ स्टेशन इंजीनियर. ही वाज abducted and killed. His body was recovered after 20 days. And when I talk about the 47, the 200 of our clan were killed by the Kabylis, 30,000. See how the truth was not, they had simply masked the truth because they wanted to carry forward their agenda. Nobody talked about the Sikhs. जब भी बात करेंगे आप बात करेंगे मैसेकर हुआ था, जम्मू में हुआ था. When you talk about that massacre, it is only one community. Nobody else will be talking about that 47 में massacre कि भाई हुआ क्या था. Partition की बात करते हैं, we talk about 2 Punjab. But if when I was talking about this pagdi, the reason was that had those 30,000 Sikhs not sacrificed their lives, they had not been fighting with those Kabylis, I think the fate of the Kashmir would have been different because they would have occupied that airport. And I think if I would not have spoken about this thing, तो मुझे लगता कि सच्चाई मैं बयान करके नहीं जाता. आखिरी बात कहूंगा, कल जब मेरा दोस्त विकास बोल रहा था तो वहां से काबू साहब की सिस्टर उठी तो उन्होंने कहा कि मेरे ब्रदर की भी डेथ हुई थी, तो उनकी आंखों में आंसू थे.
तो जब वो बोल रहे थे तब मोमेंट मुझे उसी समय फैज साहब की वो लाइन आ रही थी, हालांकि पंजाबी में आई विल बी ट्राइंग टू रिसाइट, बट बेसिक आइडिया इट्स ऑल अबाउट ए मेटाफोरिकली आई विल बी यूजिंग, उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में लिखी है कि व्हाट्स एक्चुअली हाउ आई सी एंड रीड दैट पोएट्री, दैट वुमन, ए कश्मीरी पंडित वुमन आज भी बरामदे में बैठी है, तो कहती है किधरे न पैंदियां दस्सां वे परदेसिया मेरे, साया भी नजर नहीं आता। मैं उस अमन की दिन की बात करती हूँ, when there used to be composite culture that has been torn apart by the AK-47 rifle, the Kalashnikov, जिसके स्पेलिंग भी हमें आते नहीं थे, उस Kalashnikov से उस तार फाड़ करके रख दिया उस फैब्रिक को। किधरे न पहन दिया दस्सां वे परदेसिया मेरे, का गुड़ावा शगन मनावा वक्ती वादे तरले पावा, तेरी याद पवे ते हंसा तेरा जिक्र होवे तरुआ, दर्द न दस्सां घुलदी जावा, राज न खोला मुकलदी जावा, किसनू दिल दा हाल वखावा, वे में किसदा दामन खसा। विकास की भी वही कहानी थी, काबू साहब की भी वही कहानी थी, हर परिवार की ऑलमोस्ट कहानी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कहीं हम उस दर्द से जुड़े हुए हैं। वो जो दर्द 47 से शुरू हुआ तो बहुत पहले से था, नॉट बी, बट मैं ज्यादा दूर ना जाते हुए 47 से शुरू हुआ, अभी तक चलता आ रहा है। टारगेटेड किलिंग जो शुरू हुई रिसेंटली, अगर कहीं बिंद्रू साहब से शुरू हुई, आज संजय शर्मा। शाम उड़ी का फजर उड़ी का आंखें ते सारी उम्र उड़ी का, सुबह भी एक ही बात का इंतजार है। शाम उड़ी का फजर उड़ी का आंखें ते सारी उम्र उड़ी का, आंड गवांड दीवे बलदे रब्बा मेरा चानन कर दे जग वसता है मैं भी बसा किधरे ना पैदिया दस। मेरे यहाँ भी चांदनी होनी चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो बैक ड्रॉन टू डस्क आई बीन वेटिंग फॉर एंड लिविंग विद दैट वन होप। उन्होंने कहा कि एक आशा जी थे, एक होप थे, और वाकई में जनरल रे ने जब किताब लिखी तो उन्होंने कंपेयर किया था इनको दुर्गा के साथ, बिकॉज शी वॉज द ओनली वुमन कवरिंग। आज तो बहुत आसान लगता है कि कवर करना, शी वॉज द ओनली वन हु हैड बीन कवरिंग दैट टाइम। आज हम कोई बात पे नहीं एग्री करेंगे, बट लेकिन एक बहुत मुश्किल था उस दौर में। मुझे मालूम है कि किस तरीके से हमारी बड़ी बहन बन के, माँ बन के हमें कहती थी कि जब हम रिपोर्टिंग करते थे लेट 90s में जब आए तो उन्हें कितना जाना कैसे होता था। लेकिन इस बात को खत्म करने से पहले आखिरी जो खुद मैंने कुछ लिखा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हार नहीं मानूंगा जीत के ही ठानूंगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। हार नहीं मानूंगा जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा, दुआओं में शक्ति है अगर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शन हार वो। बस थोड़ा धैर्य धर, बस थोड़ा धैर्य धर, हिम्मत न हार शुरेवर, इम्तिहान खत्म हो जाएगा फिर से कश्मीरी पंडित वैली में जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Pradeep bhai. I will have just one final question to all of you, and I'll request all of you to answer it in just 1 minute. All of you, I'll ask one final question. I'll start with Jaideep bhai again with you. Is media doing enough? Very honestly, not. We are not doing enough, and we should start doing much more than what we are doing. But कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि जैसे आपने मुझे जोड़ा है और भी ऐसे पत्रकारों को जिनके जहन में कश्मीर उस तरीके से नहीं है, वो एक छोटी स्टोरी है, हाई टीआरपी नहीं है, उसको हमको टीआरपी बनाना पड़ेगा और टीआरपी की दौड़ से बाहर निकालकर भी इन खबरों को, इन मानवीय संवेदनाओं को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, ज्यादा जगह देनी पड़ेगी। ये तो मैं ईमानदारी से स्वीकार कर ही चुका हूं कि कश्मीर के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पूरा देश जिम्मेदार है। अपने ही देश में पराया होने का दर्द क्या होता है ये समझना बहुत मुश्किल है। आप सही कह रहे थे शुरू में, जो सब लोग कह रहे थे इमिग्रेट, आपने सही कहा, ये विस्थापित शब्द सही होना चाहिए। विस्थापित हुए, आप अपनी धरती से उखाड़े गए, हटाए गए हैं, तो उसको जितनी तवज्जो मीडिया में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और जब तक मीडिया में नहीं मिलेगी तब तक जो नीति निर्धारक हैं उनके कानों में उस तरीके से जू नहीं रहेंगी। और जो नीतियां बननी चाहिए, कुछ चीजें हुई हैं, चाहे हम उनको सिंबॉलिक ही माने, 370 का 98 35 है, ये सब हुई हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। जिस तरह का अन्याय हुआ है, जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसको कंपेंसेट करने के लिए कोई भी कदम नाकाफी है। असली सुबह तो तभी आएगी जब जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं वो सारे वापस वहीं कश्मीर घाटी में होंगे और हम इस तरह का सेमिनार वहां पे जाके कर रहे होंगे। तब हम सच्ची पत्रकारिता कर रहे होंगे और सच्चा इस देश के प्रति दायित्व निभा रहे होंगे। और मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब आप लोग मुझे वहां बुलाएंगे श्रीनगर में और वहां बैठकर हम ये बात कर रहे होंगे। Thank you. Asha ji, same question. Are we doing enough? See, times have changed. It's not now a journalist who has to do something. Technology has empowered all of you, everybody, to write their stories. Who is stopping you?
A journalist has become a curator now. Journalist is no longer a story writer. Of course, we write big stories, but now the power is in the hands of common people. Everybody is a reporter today. You just have to pick up your phone, record your story. I was listening to that 91-year-old person, Mr. Bhatt Saab. His story. What a story! I mean, his grandchildren or child or son or somebody has to just record it and put it on the Facebook. So there is a lot of democracy in media. You can't blame media any longer that हमारा story नहीं यार आप अपना story कहिए. Technology is with you. एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडित्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा whether they want to go back. ये civilization battle अपनी जगह है. We have to decide. I'm not sure how fast we can go, but whether we intend to go back, I have doubts. मैं जब लोगों को मिलती हूँ, हम रेटोरिक में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन जब tangibles आता है, are we ready to go back? How will we go back? What are the stakes in J&K? I personally feel, yes, I have stakes. I would like to go back. But as a community, would you like to, unless you decide that, बाकी सब बातें रह जाएंगी, until as our friend rightly said, within 20 years our language will disappear. Our children don't speak. वो यूपी में रहते हैं, वो अबे अबे करके बात करते हैं, बाकी अंग्रेजी में, फ्रेंच में, सब में बात करते हैं. So there are existential crises facing this community, and we cannot only blame media for something. ये तो ऐसा है, when I was in Kashmir, terrorists used to come to our office. You know, their publicity managers. Hey, अगर भारतीय मीडिया ऐसे ऐसे आजादी मीजमस. What the hell? How will we get azadi? Media is just a part of the thing. It is not. It will not deliver you anything. You have to have intention and work on a strategy. Plan a strategy. हमें जाना है वापस की नहीं, ये भी बात करिए. नहीं जाना है तो it's okay. Maybe it's okay with some people. जाना है तो कैसे जाएंगे? अभी JNK government had advertised. They basically wanted to see intention of people. They are new colonies are coming up. We all must remember that the alignment, road alignment, railway alignment in Jammu and Kashmir is changing the topography of J&K. I, for example, would love to have a place in Riyasi. आप लोगों में से शायद बहुत कम लोग सोच रहे होंगे, but since I have been brought up in that area, my father was an engineer in Salal project. We lived in Jyotipuram. So the moment that came, I told my brother-in-law, please fill up my form. I want to go back. So ये tangibles हम सबको करने पड़ेंगे. Conferences अपनी जगह, emotion अपनी जगह, but थोड़ा बात कीजिए. Also, when we talk of people left behind, जगती की बात हुई, बहुत काम हो रहा है. Wonderful, the person who spoke here, wonderful work. I am privy to some of the work they are going on. धीरे धीरे ही फर्क पड़ता है. लेकिन my complaint to the community is there are some 5,000 Kashmiri Pandits living in Valley, and I am privy to their condition. Most of them have not been able to come. किसी का paraplegic बच्चा है, किसी का पढ़े ही नहीं है ऐसे कश्मीरी पंडित भी हैं. People who are not studied. वो हम क्या करेंगे? दूर गांव में रहते हैं, बड़गाम के कैंप में रहते हैं. अभी भी शायद पता नहीं अब शिफ्ट हो गए कि नहीं. 5-6 years back I went there, I met them, and the lady asked me, सिद्दीक में हाथ रखिए. It happened to me. मैंने चुन क्या नखत्र की. She didn't say. There are 5,000 souls living there. Their daughters are desperate to get out of that place. उनको batches नहीं मिल रहे. अच्छा, उनके साथ शादी नहीं करते हैं कश्मीरी पंडित. कश्मीर तिमासन सरी मुसलमान बने. Honestly, सब लोग यही बोलते हैं. One of my cousins was struggling to get a daughter-in-law and मतलब matchmaking कर रही थी. I said कश्मीर में ढूंढो. अच्छा, ढूंढे भी कैसे? कोई institutionalize करिए. तो please work on some tangibles. There are a lot of work needs to be done. और सबसे पहले ये देखिए हमें जाना है कि नहीं, नहीं जाना है तो क्या करना है. और लैंग्वेज के बारे में मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ. अगर लैंग्वेज को लाइव रखना है तो यू विल हैव टू डू समथिंग मोर देन जस्ट customary कभी थोड़ा बहुत कश्मीरी बोल लिया. I am privy to Malayalis living in my area. I live in Indirapuram. There is a not the strongest community. जितने भी 2-3 हजार जितने भी families हैं, they bought a place, small LIG, low income group flat, which is a single room flat, and they employed a teacher to teach Malayalam to children. And the government of Kerala, when they came to know, they connected with them.
they would organize, cultural shows. They would, and they supported them financially. So all these things can be done. Again, settlement. Why we should go back and how we should go back. In Chennai, there's a place called Mylapore. Mr. Mattu will know it better. There are all वहाँ के कश्मीरी पंडित जो है, पटर लोग उनको बोलते हैं, the Brahmins of that place. There was a cultural revolution. There was a caste revolution there. Because of that, Brahmins were thrown out. The way we had been, that was non-violent, of course. So Patars, they were very genius people. When we say we are the brightest people, I'm sorry, we are good, but then what is the level of goodness? We know the Tamil Tambrams, they're all over the world. They are in whichever country, top institution of the world, you say they are there. But in Mylapore, they have a settlement where they will sell their house only to a putter. They will not sell it to non-putter. It's on a community level. So these kind of initiatives, I think these are a few suggestions which I can give, and people can take note of it. Thank you so much. Ashish ji, I just want to ask Asha ji one question. Can we keep that to the last? Just finish this and then we can ask questions. कश्मीर फाइल्स की टीम भारत के आदरणीय हृदय सम्राट प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने गए थे, तो उसके बाद एक छोटा सा वक्तव्य आया श्री नरेंद्र मोदी जी का। कश्मीर का बहुत सारा सच छुपाया गया था, और ये सच कब से छुपाया गया है? ये सच जून राज से छुपाया गया है। जून राज के बारे में शायद कश्मीरी पंडित समाज भी बहुत कम जानता है, और जून राज ने ही ये कहीं न कहीं संकेत दिया है कि कश्मीर में एक बट मज़ार भी है। वो आप समझते हैं कि मज़ार क्या होता है और बट, इनका कोई लिंक नहीं पर लिंक्ड है। दूसरा, जब कोटरानी और शाहमीरी का वध होता है, डिफरेंसेस होती हैं, उस समय एक बट भिक्षु और एक और सिपाही को लेकर वो सिर्फ शाहमीरी को उसका स्वस्थ लाभ कैसा हुआ है ये पूछने के लिए भेजता है। ये कोटरानी जी भेजते हैं उनको। एक तो कोटरानी जी के बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है, इतिहासकारों ने बड़ा डिस्टॉर्ट किया है। तो शाहमीरी बट भिक्षु को भी और सिपाही का वध करके उनके खून से नहाता है। दूसरा कि कोटरानी जी के साथ जब वो एक विवाह संबंध बनाकर उनके साथ व्यवहार करना चाहता है और अव्यवहार करना चाहता है, तो कोटरानी अपनी अंतड़ियां निकालकर उसको सौंपती है। सिकंदर बुद्ध शकुन से लेकर जवाहर खान तक ये जो 400 वर्षों का दौर है, आपको इतिहास के पन्नों में ये देखना चाहिए, इतना परसिक्यूशन होने के बाद भी आपने सनातन को जिंदा रखा है। (2019) 13 सितंबर, जिस दिन हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक श्री टिकलाल जी का एसेसिनेशन होता है, उससे लेकर पूरे 105 दिन गिन लिए। 27 दिसंबर को हमारे जो पेन था हमारे समाज का, श्री प्रेमनाथ भट्ट जी, उनका एसेसिनेशन होता है। सारा कश्मीर का जो कश्मीरी पंडितों की साइकोलॉजी है, ये सारे 105 दिनों में है साइकोलॉजिकली हमारा एक्सोडस होता है। ये कहीं नहीं छपा, ये छुपाया गया। और ये भी छुपाया गया, चाहे वो सरला भट्ट को कैसे मारा गया, प्राणा गुंजू और उसके हस्बैंड को, उसके विद्यार्थियों। इसलिए एक, जैसे एक बच्ची ने, वितस्ता ने कहा, यहाँ हम सबके पास अपनी अपनी हजारों स्टोरीज हैं। विषय ये है कि ये एक ऐतिहासिक विषय है, ये फिजिकल एंटिटी की बात नहीं है, ये मेटाफिजिकल एंटिटी की बात है। हम एक स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को बिलोंग करते हैं, एक मिस्टिक डायनास्टी को बिलोंग करते हैं। हम एक फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। ये 4-5 लाख लोग कश्मीर से विस्थापित हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक सिविलाइजेशन वहां से
विस्थापित हुई है, एग्जाइल में है, तो हम सबका जो बहुआयामी धर्म है, वी डोंट हैव वन डायमेंशनल रोल, वी हैव मल्टी डायमेंशनल रोल। उस मल्टी डायमेंशनल रोल में भारत की जो सुरक्षा है, भारत की जो भूमि है, भारत की जो ज्योग्राफिया है, हमने कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि हमारी भी भूमिका रहनी चाहिए, चाहे वो तिब्बत की बात हो, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान की बात हो, उसमें एक चीज बहुत अनिवार्य है, जिस यासीन मलिक की बात चर्चा हुई है कि जिसको भारत सरकारों ने, अभी ये मीडिया की जब बात कर रहे हैं, मीडिया का एक स्पेसिफिक रोल होता है, मैं मीडिया को बहुत फॉलो भी करता हूं, मेरी मित्रता भी है, पर मीडिया एक लेवल तक कर सकती है। विषय ये है कि 90s में भारत सरकार कश्मीर के सेपरेटिस्ट को किस तरह से ग्लोरीफाई करती थी, और यहां तक हद था कि शायद कश्मीर को लेकर भारत सरकार 90s के लास्ट लेग में निगोशिएशन पे भी था। अब परिवर्तन हुआ है, सारे देश में परिवर्तन हुआ है। जिस यासीन मलिक की बात आप कर रहे हैं कि वो एक ग्लोरी, हाँ मुझे एक बात याद है, दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जिस दिन हम पहली बार श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट गए थे, जब दरबार मुंह होता है, तो मैं आ रहा था, एक हमारी यहाँ एक मिनिस्टर थी प्रिया सेठी जी, प्रिया सेठी जी भी आ रही थी, अंदर आ रही थी, मैं भी आ रहा था, तो एकदम से उसने सुरेंद्र जी नमस्ते कहा। पहली बार मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा कि श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट में पहली बार इतने जोर से किसी ने नमस्ते किया। मैं अभी 2015 की बात कर रहा हूँ, और ये भी आप कहता हूँ कि उस समय बड़े सारे जो आसपास लोग थे वो एकदम से रुक गए थे एक नमस्ते सुनकर। अब बात बदल गई है, अब आपको फोनों पे बहुत सारे नमस्ते सुनने को मिलेंगे, और जो यासीन मलिक, जिसके लिए बहुत सारे एक सेपरेटिस्ट वकील जब मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप इंटरवीन कीजिए एक विषय को लेकर कि डिमिलिटराइजेशन की संभावना क्या है। हालांकि मैंने उनको कहा था ये विषय तो है, पर मेरे लिए विषय है डिमिलिटराइजेशन कैसे हो सकती है। तो उसमें वो यासीन का ही सारा ग्रुप था, और जब 5 अगस्त से बाद एक SHO इंस्पेक्टर इसाक है, इंस्पेक्टर इसाक जब मैसूमा में यासीन मलिक के गर्दन के कॉलर को पकड़कर घसीटता है, वो आज का भारत है, वो मोदी जी का भारत है। ये भी तो देखना है ना आपको। जिस बिटा कराठी की बात कर रहे हैं, और वो बिटा कराठी, जैसे इन्होंने कहा कि शायद उसको अब कश्मीर सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, शायद उसको भी लीडर बना रही थी। वो बिटा कराठी आज जेल में है, और उसकी जो श्रीमती वो KS ऑफिसर है, शी हैज बीन सैक्ड, शिबिर शाह जेल में है। वो सब एक ही लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे कुछ तो कुछ रिफॉर्म हो रहा है। जिस तिरंगे का अपमान हो रहा था, मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि अनंतनाग में जो लाल चौक है, इस बार क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया है कि स्वर्गीय प्रेमनाथ भट्ट के मारने वालों में से एक मंजूर दर्जी, मन दर्जी के नाम से एक, करेक्ट, उसने फिर उसका एसोसिएशन करके उनसे अलग होकर वो लाल चौक में बैठकर पुराना गोल्डन सिगरेट पी रहा था। मालूम नहीं सत्य क्या है, पर मैं उस लाल चौक पर जाकर खुद इस बार वहां तिरंगा फहराया हूं। ये भी आज का सत्य है। आप यकीन कर लीजिए कि जो ऑफिसर्स कहीं ना कहीं मुलविस थे, उनका भी एक लिस्ट बन रहा है। जिस प्रकार से कश्मीर में जो देखिए, हम सब कश्मीर से इसलिए निकले थे जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे। बहुत बार एक बात आती है कि मोदी जी ने क्या किया। ये मैं मानता हूं कि हमारे साथ, मैं आइडेंटिफाई करता हूं अपने परिवार के साथ, अभी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। ये मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं अपनी पार्टी में भी ये बात करता हूं। पर मेरा ये मानना है वो फैक्टर्स अभी हैं
जो फैक्टर्स हमारे वहां से हमारे सिविलाइजेशन को निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उन फैक्टर्स के रेजिडुअल फॉर्म में अभी है। जब तक न वो कंप्लीट वहां, देखिए जो मल्टीपल नैरेटिव्स कश्मीर में थे, आपको नहीं लगता ऑटोनॉमी को लेकर, सेल्फ रूल को लेकर, आजादी को लेकर, ट्राई पार्टी अटैक्स को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इंडिपेंडेंट कश्मीर को लेकर, इन सब नैरेटिव्स को हमने डिमोलिश करके आज क्या कह रहा है कश्मीर? आज कह रहा है आशा जी अब हमको ओ नहीं साहब इलेक्शन करो मेहरबानी करके, आप स्टेट ऑफ रेस्टोर। So in terms of changing the discourse, it is in the process and with a very good speed. So ये मानकर चलना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम कश्मीर के हिंदू को वापस जाना है, और हमारा जाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कि सनातन को दोबारा वहां रिवाइव करना। हम तो माध्यम बनेंगे उस सनातन को रिवाइव करने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये 2024 के बाद 2030 तक जो अभी हम मानते हैं कि ये अभी ये जो काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल के मध्य में ये सब होने वाला है, क्योंकि उसके बाद क्योंकि भारत अब 2047 की बात कर रहा है। भारत अब ये बात कर रहा है कि भारत विश्व का सबसे मार्केट बनने वाला भी है और स्वयं भी विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। इसलिए 2024 से लेकर 2035 तक कश्मीर में सनातन दोबारा पनपेगा। आज हम अकेले नहीं जाएंगे, भारत के सनातन को भी लेकर जाएंगे और हम नरेंद्र मोदी जी को भी साथ लेकर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिजीज। कश्मीर में एक जोक होता था उन दिनों, क्रोसिन की जगह दैट यूज्ड टू बी द टेबलेट, एनाल्जेसिक टेबलेट हुआ करती थी कैलपॉल। तो कहते थे अगर टांग का दर्द है तो जंगपॉल ही चाहिए होगी, कैलपॉल विल नॉट डू एनीथिंग। द सेम वे वी हैव, बिकॉज यस्टरडे सदगुरु जी वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट वी नीड टू शिफ्ट द नैरेटिव। नैरेटिव क्या रहा है कि अभी तक पिछले 33 इयर्स में देयर हैड बीन समथिंग कॉल्ड द डोमिनेंट नैरेटिव, एंड वी हैव टू डेमोलिश दैट डोमिनेंट नैरेटिव एंड डेसिमेट दैट कंप्लीटली। टू सम एक्सटेंट वी हैव सक्सीडेड। आप देखिए एक तरफ 35 तंजीम विद ऑल दोज AK राइफल्स एंड एम्युनिशन इक्विवेलेंट टू व्हाट वी कैन रेज द वन आर्मी। अगर आप देखेंगे पिछले 90 से लेकर अभी तक जितना एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, एंड विद वन फिल्म वी आर एबल टू डेसिमेट दैट। तो आप सोचिए कि किस तरह हम नैरेटिव अगर चेंज करते हैं पूरी तरह से, वी आर एबल टू डिमोलिश दैट नैरेटिव, थिंग्स कैन चेंज। One thing we should not be confused about, because they will come out with so many reasons, they will keep on spinning things, they will try to make you believe that this has happened. Sometimes they will say it was because of rigging, sometimes they will say because somebody picked up the gun because he was targeted by security forces. But what is more important is that they had always targeted Hindus, they have always targeted Hindustanis, they have always targeted Hindustan. When I say they have targeted Hindus, we know that what they did with Lasa Kol. Lasa Kol was targeted because he was Hindu. It was because of his faith. When you see the people like Ayub Pandit, they are lynched by the mob outside that he was a Hindustani because he was wearing the uniform for Hindustan. He was not again targeted because he was a Muslim. And when they burn your schools, their bridges, because they are targeting that time the Hindustan, because they are trying to burn all the symbols of your country. That's what they are trying to do. And the second is, my suggestion is that no doubt the community has really worked hard. मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि these positive stories are to be told to them कि जानवर को तो हमने क्या कर दिया, वहां भी मार खाई, पार भी मार खाई, हर जगह मार खाई। लुक एट दिस कम्युनिटी, हाउ दिस पीपल हैव डन। कोई सीओ बन गया, कोई कहीं बन गया, लेकिन we should not be satisfied with that. What actually you need to have the footprints. मुझे याद है कि इराक वॉर, जो फर्स्ट गल्फ वॉर वाज गोइंग ऑन, तो हम छोटे छोटे होते थे, पहली बार हमने वर्ड सुना था कारपेट बॉम्बिंग। वी हैड नो आइडिया बिकॉज वी हैड ऑलवेज सीन द कारपेट जो हमारे घर पे होता था। व्हाट इज दिस कारपेट बॉम्बिंग? आई यूज्ड टू रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी एन एयर कमांडर कॉल्ड जसजीत सिंह। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम, he said what will be the fate of the war? He said that carpet bombing is not going to decide things, because when you are using technology, having these seminars, discussing things, that's like a carpet bombing which you are doing. Unless and until somebody has to move, the ground forces have to move, and they have to raise the tricolor there. So we have to go to that place. Unless and until we are not there, that carpet bombing is not really going to work. And how it is going to really work? Because more important is that you have to prepare your youngsters to go for the JKAS examination. Jammu Kashmir Administrative Service, IAS examination.
Nowadays, it's a union territory. They can have, unless and until you are not a part of the decision making. देखिए छोटा सा टीचर्स लगाए जा रहे थे, रेवेन्यू ऑफिसर 4 पटवारी कश्मीरी पंडित लग गए. They started targeting Rahul Bhatt and others because they thought कल जमीन का जो होगा तो they will be deciding things. ये 4 पटवारी ने हलचल मचा दी, कितना परेशान कर दिया. आप सोचिए कि then more and more Kashmiri Pandit are there in the decision making, so they will be changing. और बाकी रहा, हम तो अपना काम कर रहे हैं. We'll keep on doing that. We'll keep on knocking the door. It will not open. Revolution can't be brought in a day, but we'll keep on working on this direction. And I'm sure that tomorrow the narrative is going to change. And rightly said, ये बात सही कही. मैंने देखा है वो दिन भी. लास्ट बात बोलूंगा यासीन मलिक का. We used to feel very bad. यासीन साहब आइए. SP used to open दरवाजा and he used to sit. वो जैसे पाकिस्तान से आते थे, they used to have the one the ma'am was talking about Pakistan or Ghazi, how the prince had returned from Pakistan and this prince was taken to, as Dulle Raja was taken to jail and इतना होता था. लेकिन जब लास्ट टाइम यासीन मलिक को लिया, पुरानी, वो कहते कश्मीरी में कहते छकड़ा, वो पुरानी गाड़ी आई थी, पुरानी बस आई थी, घसीट के अंदर डाला था और अभी तक अंदर है. So that is the change. We should also appreciate that. Thank you very much. Thank you, all of you. And I think we have now run out of time. So, any questions? Then possibly we can take. We can engage, one on one. No, because I because- think they're waiting for One another second, session. one second. Ashaji, I have great respect for you, wonderful journalist. But when you said that we are not going to go back, that really hurts me. I'll tell you why. It's not a question of whether we'll go back or not. At the moment, we don't have the right to go back. And there is a difference because our children don't have the right to go back. I mean, we live in foreign countries. And our children, it's painful when one of my colleagues, her children, they go for summer vacations, they go to Srinagar, and our children, they come to Delhi. That is the difference. Whether we go back or not is a separate story, but we don't have the right to go back. And that needs to change. Because when journalists like you say that is like No, when I'm exonerating. saying- I understood what you're saying. No, I'm saying that exonerates the government. जैसे इन लोगों को तो वापस जाना ही नहीं है, तो फिर क्या करें इनका? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैंने जब ये कहा, it was out of pain. I'm not saying that I'm saying, एक तरह से मैं sarcasm में बोल रही हूँ कि हमें जाना नहीं है क्या? और also when you go back, please don't go back individually. जैसे ये लोग ये कश्मीरी पंडित employees गए हैं, there's guinea pigs for them. Please go back as a community. Maybe you get a piece of land, you build flats there, whatever arrangement. You might have a tourist hut there, go for 2 months a year. You have to go back in a planned way because the feedback from the ground is that radicalism is still there. Gun has been snatched away, it's being snatched away. Terrorists are dying or they're just getting neutralized or they're becoming. नहीं वो मैं वही तो कह रही हूँ मैं वो क्योंकि इंडिविजुअली गए थे बेचारों की मजबूरी थी नौकरियां चाहिए थी अगर आप लोग बड़े बड़े लोग हैं किसी कश्मीरी पंडित की सपोर्ट कर सको उसको नौकरी दे दो इधर वो क्यों जाएगा बेचारा मरने के लिए नहीं बेचारे जाए अरे इट्स देयर ब्रेड एंड बटर बेचारे गरीब लोग हैं मेरे पास जॉब नहीं होगा मैं क्या करूंगी क्या खाऊंगी मैं सो व्हाट आई एम सेइंग अम्बादत साहब की बात को मैं एक दो लाइनों में बताती हूँ इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा मेरे 40 years of my journalistic history my career for the first time I am seeing a government which has a plan for Kashmir something might work something might not work but they are thinking long term and they have a plan abhi tak hum jo dekhte the as journalists used to report it was ad hoc आज ये हुआ अच्छा अब ये पॉलिसी को रिवर्स कर दो but for the first time I mean things are happening which will have long-term impact and it's a time for Kashmiri Pandits to associate with the government, work with them for everything we want, even rehabilitation going back. अकेले कुछ नहीं होने वाला. But in this plan, aren't we the stakeholders where they need to engage with us? Where we are asking for an audience, that engagement is not happening. That's the pain. दो बिंदु आपके सामने और शेयर करूंगा कि जो अभी वायुमंडल है कश्मीर का तो उसमें एक तो कम से कम इतना तो मानी गई कि राहुल गांधी जी को भी वहां तिरंगा फहरने का एक टाइम मिल गया वहां मौका मिल गया वहां तो
ये भी देखा जाए तो एक अपने आप में एक इतिहास है। दूसरा एक बहुत जो बड़ा इवेंट है, जो आप सब जानते हैं कि G20 का, उसकी डेस्टिनी भी श्रीनगर और लद्दाख है। तो ये एक एक एम्बिशियस इशू है, एक एम्बिशियस प्लान है। हम सब जब अपने वापस जाने की बात कर रहे हैं, तो अभी ये भाई साहब जो पूछ रहे हैं, तो बहुत जायज सी बात है कि एक तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हम एक बार ये तय कर लें, रादर तय नहीं करें। मैं एक बात बताता हूं आपको, पता है आप सब क्यों आए हैं यहाँ? आप सब इस समय इस कॉन्फ्रेंस में, कॉन्क्लेव में क्यों हैं? एक तो आपको पता है, एक मुझे पता है। जो आपको पता है वो आपको पता है, जो मुझे पता है वो मैं बता दूंगा। एक गाना है ना, मेरे रूम रूम में बसने वाले राम, है ना? हमारे रूम रूम में राम बसता है, हमारे रूम रूम में कृष्ण बसता है, हमारे रूम रूम में कश्मीर बसता है। कोई ऐसा है हम में जो खड़ा होकर ये कहेगा कि मेरे आंखों में कश्मीर नहीं, मेरे रक्त में कश्मीर नहीं, मेरी ममता में कश्मीर नहीं, मेरे मन में कश्मीर नहीं, मेरे दिल में कश्मीर नहीं, मेरे आत्मा में कश्मीर नहीं? आप सबके आत्मा में कश्मीर है, मन में कश्मीर है, दिल में कश्मीर है, इसलिए आप आए। एक दूसरा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर से आप किसी को अपना पार्लियामेंट मेंबर बना के लाए? जब आप निर्णयों की बात करते हैं, रुके बाद में बात करते हैं, वो व्यक्तिगत बात करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। रिजॉल्व टुवर्ड्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दैट्स माय पॉइंट। दूसरा कि जितने भी यहाँ प्रभु महान भाव बैठे हैं, कि एक तो मुझे टोटल डायरेक्टरी चाहिए, सारी डायरेक्टरी चाहिए मुझे। हो सकता है इस पे काम हो सकता है ना? डायरेक्टरी फैमिली है डायरेक्टरी महाराज। आई बिलीव वी आर ए फैमिली। उसकी वना फैमिली है डायरेक्टरी गस आसी। अगर हिंदुस्तान में 7 स्टेट्स में बसान, दुनिया में 15 मुल्कन में बसान, अगर डायरेक्टरी गस आसी, मोटो साहब भी कर सकते हैं अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं। तीसरी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक जो डोमिसाइल एक्ट आया है, कृपा करके जो भी डोमिसाइल नहीं बना है, जो बच्चे हैं, उनको भी डोमिसाइल का वो डोमिसाइल ही हो जाए जम्मू कश्मीर में। क्योंकि आने वाले दिनों में क्यों हम बिलीव करते हैं कि जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, हम सबके लिए अच्छा होने वाला है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो हिमालय के बगैर नहीं हो सकता है। और हिमालय में बसने वाले जो हैं वो सनातन, वो जब तक आप नहीं बसेंगे तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। और जब तक आप, इसलिए आप मान लीजिए कि इस बार समय अपना समय लेगा, पर हम ये कहते हैं आपको कि एक रेजोल्यूशन जो है, हम तो 7 बार निकल आए हैं, 7 बार एग्जोडस हुआ है, 7 बार वापस गए हैं। इस बार भारत ने ये तय किया है कि इस बार हम वापस जाएंगे, दोबारा एग्जोडस होने के लिए नहीं। इसलिए ये रिजॉल्व हमारा फाइनल रिजॉल्व होगा। वन तो सारवेन ये प्रार्थना कि अशी आसो। तो सारवेन नमस्कार। आशीष जी, क्या क्लोज हो गया क्या? एक क्वेश्चन। रिटर्न का जो बहुत बड़ा इशू है जिस पर बात चल रही है, रिटर्न को लेकर के हमारे बहुत सारी कम्युनिटी में अलग अलग ख्यालात भी है। कुछ लोग सेपरेट होमलैंड की बात कर रहे हैं, कुछ लोग एक जगह बसने की बात कर रहे हैं, वन प्लेस सेटलमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में चला जाना चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल कॉन्क्लेव कर रहे हैं। यहां से एक मैसेज क्या लेके जा रहे हैं, एक बात ये। दूसरी बात, रिटर्न तक पहुंचने से पहले कम्युनिटी में कुछ सीबीएम्स तो होनी चाहिए।
कुछ कदम तो ऐसे दिखने चाहिए जो उसकी तरफ चल रहे। मैं एक उदाहरण दूंगा, ये समाज पिछले 20 वर्षों से एक आंदोलन को लड़ रहा है। हालांकि यहाँ इतनी जिक्र नहीं हुई, सिर्फ आदरणीय काशीनाथ जी पंडिता ने कल उस पर चर्चा की। वो हमारे जो धरोहर है कश्मीर में, श्राइन्स और टेम्पल्स, जिनकी वजह से हमें आज भी वहां कोई कहता है कि यहाँ पंडित रहता था, उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक आंदोलन चला, पैसेज ऑफ श्राइन्स एंड टेम्पल्स बिल, ताकि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या वक्फ बोर्ड है उस तरह पर बनाई जाए ताकि उनका संरक्षण मिले। ये भी नहीं हो रहा। तो इन चीजों को लेकर के और रिहैबिलिटेशन के बीच में एक बात और जोड़ूं, जो एक दिन हमने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से की थी जब वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन जम्मू आया था। तो आप देख लीजिए पूरे देश में या खासकर जम्मू कश्मीर में कम्युनिटीज कैसे बसती है। आप जम्मू में देख लीजिए, किसी से पूछिए मैंने मुस्लिम इनहैबिटेड एरिया में जाना है तो वो आपको कहेगा खट्टी का तालाब जाओ, बठंडी जाओ। आप कश्मीर में किसी को बोलिए कि मैंने सरदारों के इलाके में जाना है, वो 2 एड्रेस जल्द देगा आपको, त्राल जाओ, मैं त्राल का ही हूं, त्राल जाओ या बारामूला जाओ। आप किसी को कहिए कि शिया फिरके से मिलना है तो वो कहेगा बड़गाम जाओ। ऐसा नहीं है कि उनका कोई सेपरेट वो एरिया है, लेकिन वो सारी कम्युनिटी एक साथ रहती है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनमें। लेकिन जब हमारी बात आती है तो इस चीज को उस तरीके से नहीं देखा जाता है। तो क्या इस ग्लोबल कॉन्क्लेव से, क्या जब कश्मीर में जैसे अभी प्रदीप दत्ता जी बोल रहे थे कि जो रोड्स वोड्स की वहां बात चल रही है, बहुत चीजें बदल गई है, क्या हमारे समाज के लिए कोई ऐसा विजन नहीं हो सकता है कि हम एक जगह वहां बसे जहां पर हमारा कल्चर भी फ्लरिश हो जाए और ये श्राइन्स टेम्पल्स की बात जो है उसके संरक्षण के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए? ये क्वेश्चन इस पैनलिस्ट से मेरा जरूर है। एक छोटी सी बात कहूं, सबसे बड़ी चीज है दृढ़ निश्चय। मैं जब सुबह निकलता हूं, मैं पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता, ज्यादा नहीं जानता हूं। देश शिवा वर मोहे हे शुभ कर्मन से कभू ना डरूं, ना डरूं वर्षों जब चाहे लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दृढ़ निश्चय आप रखिए पहले जाने का, वो बात की बातें हैं कि किस तरह होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जी, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि अभी पोस्ट लंच 2 सेशंस होंगे और इस पे थोड़ी चर्चा होगी, तो आप हमारे साथ रहेंगे तो एक प्रेजेंटेशन आएगी, जो आपने पूछा है उसके शायद आपको थोड़े से आंसर मिल जाएंगे। तो वी वुड लाइक टू हैव यू अराउंड दैट टाइम। आशीष जी सॉरी, वो नहीं जाने के लिए नहीं, हम आपसे एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे आपके लिए जो मैं होल्ड कर रही हूँ क्योंकि समय की कमी है, लेकिन पूछेंगे जरूर। हाँ जी, हाँ जी। आशा जी, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट यू आर मोर ब्यूटीफुल नाउ। हाँ जी, लंच के लिए करना है ना। आराम से प्लीज चिकसान पत्ते क्योंकि बच मेच बचले मसन मगर बार बार गसो तो तेले हको प्लीज। हाँ हमारा आज ना सॉरी एक्चुअली क्या सारी सेशन गए ना थोड़ा सा लेट आज शुरू।
Thank you all for watching online. Thank you all for watching online. We will be returning. We will be returning after lunch in approximately 1 hour. So please stay tuned. We'll be back. Thank you very much.
स्कूटी पे है, ठीक है। स्कूटी पे तो इंस्ट्रूमेंट देखेगा ना कब से कीबोर्ड नहीं वो कह रहा है ये चांदनी में बांध करके बंदे
एक काम करो आप इधर अरे बांध दो यार, ऐसे रखो कि कोई शायद गिर जाएगा। टेबल कहाँ है? टेबल ये नहीं ला एक टेबल चाहिए नहीं, आपको तीन टेबल चाहिए, तीन टेबल हो यहाँ ऊपर एक टेबल, दो टेबल उस साइड, एक टेबल ये टेबल नहीं चलो दो टेबल इधर एक टेबल चलो ला ये पूरा ये माइक चाहिए माइक चाहिए वो ये नहीं इमचे स्टँडिंग ट्रेन अच्छा हाँ बेच वन इंचेस जशी बे हाँ बस इमच्या बाकी डबल सिस्टम हाँ चला काफी देखो जी बच्चे स्टोर निकल जाएगा ना निकल जाएगा आपसे आ जाएगा अपने में करना है एक सामने भागवड़े मोड़ के अंदर भाग गया पब्लिक वो पब्लिक हो जाएगा 2 मिनट में खाना खा जा अच्छा ठीक है एक्चुअली मेरे को हाइट लग रही है बचता कौन यहाँ तक हो जाएगा कोई बात नहीं दूसरा चैनल है जहाँ आप हो वहाँ करना भी मेरे को ऐसे आप हो ऐसे हो जाएगा तो सुधन अजय तुम्हें सुनी मैं तो हो अच्छा बोल दो मैंने क्या कर रहा हूँ हाँ मिल गया हेलो हेलो आँख में रुक जाओ हाँ वेट मिलिया अच्छा ठीक है ओके अजय भैया इज विनिंग योर फोटो यू कैन साइड हेलो वेट हेलो हेलो रोहन रोहन रोहन
एक और पास बनाना चरणजीत का, वो तबले वाला। हाँ वो भी वो वहां से आ रहा है मेट्रो से। साहिल भाई उधर एक कोने में लाइट मिल सकती है स्टेज पे, जहां पे ये लोग खड़े हैं कोने में। वो लास्ट वाली जो है उसको एक बारी ऑन कर सकते हैं? मैं वो टेबल के ऊपर लाइट चाहिए थी, अगर मिल सकती है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। चलो अभी नहीं, बाद में जब शुरू होगा, ठीक है। हाँ जी सचिन भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? क्या हाल है? सब ठीक है? जन नेता, जन नेता।